हॅलो. शिल्पा मॅडम, तुमची कुठल्या नावाने जॉईन झाले तुम्ही? हॅलो. मे आय ऑडिबल? शिल्पा मॅडम, हॅलो. हॅलो. वैशाली बोलून 10:55 झाली. जाऊ दे किती बघून घेते ते बरं. हो मी बघून लागतात. सर ते नाही होते अर्चनाचा लॅपटॉप तुमचा देता थोडस सेट करून घ्या मला मला प्रेझेंट करायचं. प्रेझेंट नाही करायचं मग मोबाईल बेटर राहील. मला पाहिजे मला प्रेझेंट नाही करायचं सर फक्त अँकरिंग मोबाईल वरून करू का काय मला ते कम्फर्टेबल आहे. आम्ही तेच म्हणतात क्लिअरिटी चांगली आहे.
कम्फर्टेबल राहते मॅम. मलाही कम्फर्टेबल मोबाईल हो त्याच्यामुळे ते बेटर राहील. चालेल. तरी मी चालू करून देते. झूम ऍप डाउनलोड करायला लागेल ना. हो. वो पार्ट ये पैनल पे होस्ट मुझे भी बनाया लेकिन सबको तो पता है. नहीं. सर हे होस्टला आपल्याला हे आहे म्हणजे क्या मतलब चैनल में दिख रहा हो तो होस्ट को मैं तुमको ऐड करता हूँ ना उसके से नहीं होता. होस्ट तर छपो होस्ट मी आहे. हो. सर म्हणजे फक्त ज्याला प्रेझेंट करायचं त्याला दाखवा. प्रेझेंट नाही नहीं मला तो एंकरिंग करायचं. तो यही मेरे लिए ना मुझे कंफर्टेबल है. मैं ऐसे पकड़ती हूँ आपकी इधर. हाँ. बस का? तू जॉईन होते का लॅपटॉप वरून होत असेल तर हे लॅपटॉप डाउनलोड करून डाउनलोड करायचं. आपण जवळपास तिकडच्या मेरा जवळ आहे. डॉक्टर श्रीकांत शिल्पा मैडम को अनम्यूट करके करिए बोलना. डॉक्टर श्रीकांत अनम्यूट करो. हाँ अनम्यूट करो बोलो. हेलो. यस डॉक्टर शिल्पा मैम यस बोलिए. यस सर. तुम्ही शेअर केलंय का स्क्रीन शेअर केली का तुम्ही नाही ना. Yes, we will wait for 5 minutes and then we will start our sessions.
Yes, we will start the program within 5 minutes or hardly 2 to 3 minutes. Just wait for 2 to 3 minutes. Yes, good morning all. Today I welcome on behalf of Yes, sir. Jupiter Ayurvedic Medical College. Yes, Dr. Silva, proceed. Yes, sir. Is my Yes. voice audible? Yes, yes, you are audible, your video also visible. Yes, go ahead. Okay. Namaskar. Good morning. I am Dr. Shilpa Khobragade, coordinator for today's national webinar, and I welcome all the participants, guest speaker, and MUHS observer in this program. On the occasion of Silver Jubilee of Maharashtra University Health Sciences Nashik, Jupiter Ayurved Medical College and Tarini Ayurved Hospital is organizing a national webinar on publication ethics in recognition with Maharashtra University Health Sciences Nashik. Now, I would like to tell a brief about our college. Jupiter Ayurved Medical College and Tarini Ayurved Hospital is the institute flourishing since 2001. In these 2 decades, the institute has developed and is trying to develop more very consistently. We in Jupiter Ayurved Medical College impart the Shastra-based education with all the concurrent modern knowledge. So the students who come out of this institute is equipped with the pure knowledge and skill of Ayurveda and will be an efficient physician who can diagnose a disease precisely and plan the treatment protocol based on the diagnosis, based on the Ayurvedic principle, and thereby accomplished the aim of the Ayurveda, which is maintain the health of the healthy and curing the ailment of the ailing. Let us learn Ayurveda as ancient as ever and brand Ayurveda as modern as never. So today, this webinar is conducted on very important and useful topic, that is publication ethics. Dear friends, you all know academic research involves many coordinated steps and process. Appropriate study design, study execution, data collection, data analysis, and finally publication. While going through these steps and culminating in a publication can be a different experience. One should be aware of ethical code of conduct that binds researcher at every stage. That is why we need to know publication ethics. And today for this topic, we will have today's eminent guest speaker to guide you on the topic that is publication ethics. We have
Dr. Sundar Singh Danga, sir, and he will deliver the session on plagiarism and UGC guideline. Then we have Dr. C.M. Gullane, sir, and he will deliver the session on reference set and application. Our next speaker will be Dr. V.C. Bhavani, sir, and he will deliver the lecture on publication guideline. I welcome all the speakers in today's program. Further, I would like to welcome here MUHS observer Dr. Shivananda Tonde, sir. Dr. Tonde, sir, working as an associate professor, Department of Swasthavritta, Ayurved Seva Sanghas, Ayurved Mahavidyalaya, Ganeshwadi, Panchavati, Nashik. Let's move to our first speaker, Dr. Sundar Singh Danga, sir. Dr. Sundar Singh Danga, sir, is a principal, Jupiter Ayurved Medical College, and a professor and HOD, the Department of Ayurveda, Jupiter Ayurved Medical College, Nagpur. He is executive editor in chief of International Journal of Indian Medicine Journal. Author of the book Research Methodology, exclusive written for MD, MS, and PhD students. I welcome you, sir, and I request you to start your session, sir. And for participants, you may all ask the questions after finishing each session by putting a message in the chat box or by raising your hands in this webinar. Now, I request sir to start his session. Thank you. Thank you all. And भगवान धन्वंतरी को प्रार्थना करते हुए हम इस नेशनल वेबिनार ऑन पब्लिकेशन एथिक्स को स्टार्ट करते हैं. First of all, I would like to thank you all the participants who have joined this national webinar online. So thank you first of all them. And after that, I would like to thank you Maharashtra University of Health Sciences for recognition of this national webinar, Department of Ayush, MHS Nasik. And I welcome here Dr. Shivanand Tonde, sir, who is MHS observer for this national webinar. So without wasting time, I would like to start my sessions. So my topic given is plagiarism and University Grant Commission guideline about the plagiarism. It's very important and vast topic nowadays, because what happened while doing the postgraduate, while doing the PhD, while submission of any articles. I'm audible, na? Dr. Shilpa and Dr. Chetan. My voice is clear? Yes, Dr. Sundar, his voice is clear. Thank you. Yes, thank you. So this is a very important topic. That's why we have taken this as a very important topic, because while writing your article, while writing your dissertation or thesis, and during submission your thesis, either maybe from a postgraduate, MD, MS, or sometimes while you submitting the thesis to university for your PhD. So now university has made mandatory to check plagiarism of your whole written manuscript, article, thesis, project, whatever you written in your materials. So people should know, the researchers or the stakeholders should know about the plagiarism. That's why I have taken this important topic. So in this lecture, we will see what are the types of plagiarism, what is plagiarism, and ideally this lecture should be joined, means those people should join, who should attend this training and absolutely these lectures. Those who are doing the PG students, they are very important for them to know about the plagiarism. Then PhD scholars, since last 2-3 years, many students has taken admission in the PhD in the Maharashtra University of Health Science Nasik as well as some other deemed university. So they should also know about the plagiarism. Those who are writing the books or textbook, they also should aware about these things, plagiarism. And the people who are involving in the research, okay, while after doing the research, they want to publish their article in the national or international journals. Sometimes they want to publish their article in the PubMed, Scopus, high impact journals. So they should also know about the plagiarism. What is the plagiarism? Or the content writer, those who are the bloggers, want to write on, sometimes some material on the internet, they want to publish some matter on the internet, they should also know the plagiarism. Editorial board members of the journals,
Absolutely. Those who are working as a reviewer, as an editor of a particular journal, they should also know about this journal particularly. And after that, the ethical committee members, because they have to scrutinize, they have to, review the synopsis, review the dissertation, thesis. So all these people should know about this thing, plagiarism. So we will see, and absolutely teaching faculty also should aware about this. And after completing or after hearing this program, you will know, you will like to, you will understand better what is the plagiarism, what are the types of plagiarism, and after knowing these things, you can avoid the plagiarism in your while you are writing the articles, thesis, or synopsis. If you wrote an article or even you wrote any thesis, then you should also know about the how to check that plagiarism in your डॉक्टर वैशाली मैडम स्क्रीन दिख रहा है मेरा one can put it Visible. yes okay Yes, sir, thank you are visible. thank you. Just, it was before 2 seconds it was disconnected, that's why asking. So you should also understand means you will be able to understand after this lectures what is the legal perspective if there is plagiarism found in your article or dissertation, and what is the self plagiarism, and what is the method of citation. Dr. Chetan will highlight more on that things. And after checking, after a written article, after thesis writing, and if you want to check the plagiarism, what percentage should in your manuscript, so you can check the plagiarism online as well as you can generate the report from particular software. Those are some are free and some are paid. I will also highlight them later in my sessions. And how to make your review article plagiarism free, that will also I will focus in my lectures. So we will see one by one, and what are the exception of plagiarism, we will see one by one. So what is the plagiarism? सब लोगों को पता है कि what is the plagiarism, but particular definition here. What is the plagiarism? Plagiarism defined as a taking or putting someone words, किसी और के words, किसी और के thoughts, write up, written description, research is specially finding or results. हमने किसी का रिसर्च, किसी की फाइंडिंग चुरा के हमारे रिसर्च में डाल दी विदाउट देयर प्रॉपर साइटेशन, उनका नाम न लिखते हुए, उनका कुछ क्रेडिट न डालते हुए, विदाउट देयर साइटेशन, विदाउट देयर क्रेडिट, एंड विदाउट देयर अप्रूवल आल्सो, or without their acknowledgement of the author and writer in our work, and we are claiming that that work is made by particular author or him or her, that is plagiarism. We will see further in letters. So this definition was created by me myself, and after writing this definition of plagiarism, I have put this definition in a plagiarism software. So यहाँ पे आप देख रहे होंगे the plagiarism define the taking, putting someone words dicto, जैसे को वैसे मैंने यहाँ पे डाला. Then I have checked this on a software, then there was showing that there is no plagiarism in the definition. Means that definition of plagiarism I have not taken from any source, and this is a 100% unique definition. Here you can see there is zero plagiarism. If I put this in a software also, then you can check it online. In this definition, there is no any word I have taken from any source online or any from article. That's why this definition is purely unique. Okay, this is the matter I have put. So another definition I have taken for plagiarism. Plagiarism is a form of academic of dishonesty. This definition is online available. Academic misconduct and digital cheating and breach of journalistic ethics. It is declared to be unacceptable legal act of according to the institution regulation. So what I did here, first sentence I have taken from internet, and second sentence I have written in my own words. After putting this definition of plagiarism in the plagiarism checking software, then what is showing it?
यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस इज इन हाईलाइटेड इन रेड लाइट्स. That is it. There are two sentences. One sentence just taken from internet showing 50% plagiarism. Okay, here you are looking here, and 50% is unique because second sentence I have written in my own words. So in these two sentences, 50% plagiarism material is there and 50% unique material is there. So this is plagiarism. Now we will move further for the types of plagiarism. First is a global plagiarism, means that plagiarizing an entire text by someone else. किसी ने लिखा है पूरा का पूरा copy paste कर दिया. That is known as a global plagiarism. Then verbatim plagiarism means directly copying someone matter or else words. Some part, okay, that is a verbatim. Paraphrasing plagiarism means rephrasing someone else's ideas. Suppose someone has written their own text in their own words, and what are you doing? You are copying his or her material and you are doing the paraphrasing and putting in your manuscript. That is a paraphrasing plagiarism. दूसरे के विचार लेना, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करना और अपने मटेरियल, अपने कॉपीराइट में अपने आर्टिकल्स, थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट में डालना. That's a paraphrasing plagiarism. Third type. Fourth is a patchwork plagiarism. Means plagiarizing is something which is part of different sources and stitching them together into a new one. थोड़ा इधर उधर का लेना और अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट बना देना, उसको बोलते हैं हम लोग पैचवर्क प्लेगियरिज्म. दैट इज आल्सो प्लेगियरिज्म. वी विल सी द डिटेल आल्सो लेटर. एंड सेल्फ प्लेगियरिज्म मींस रिसाइक्लिंग योर ओन प्रीवियस वर्क्स. मान लो डिसर्टेशन एमडी का किया है, उसका एक आर्टिकल बना के पब्लिश कर दिया. सेम थिंग वी आर पब्लिशिंग अनदर आर्टिकल और इन अनदर जर्नल, और समटाइम्स वी आर टेकिंग एमडी एमएस डिसर्टेशन एज अ पीएचडी डिसर्टेशन. सेम टेकिंग द कॉपी मींस दैट इज अ सेल्फ प्लेगियरिज्म. खुद का किया वो काम फिर से उसको दोबारा प्रकाशित करना. We'll see, how somehow थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखते हैं ग्लोबल प्लेगियरिज्म के बारे में. Global plagiarism means taking an entire work by someone else and passing it off as your own. किसी का और लेके हम बोल रहे कि we have written that. For example, if you get someone else to write an essay or assignment for you, or if you find a text online, submit it as your own work, then you are committing the global plagiarism. इंटरनेट पे किसे है, आपने जैसे को वैसे कॉपी किया और आपने आपका ऐसे बोल के पब्लिश किया. दैट्स अ ग्लोबल प्लेगियरिज्म. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्ट प्लेगियरिज्म का दिया है. व्हाट इज द डायरेक्ट प्लेगियरिज्म? द वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेक्शन समवन एल्स वर्क विदाउट एट्रीब्यूशन और विदाउट कोटेशन मार्क्स. जैसे ऑथर ये हैज रिटन समथिंग, उनका एक स्टोरी है यहाँ पे. लॉन्ग अगो व्हेन देयर वाज नो रिटन हिस्ट्री, these islands were the home of millions of happy birds, the resort of the 100 times more millions of the fishes, sea lions and other creatures. This red font lines are taken from this source because actual source is there. यहाँ पे मैंने सोर्स दिया है कि ऑथर ने जो मैटर लिखा है कि वहां का आर्टिकल इसने जैसे को वैसे लिया है, जो इधर आप राइट साइड में देख रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्लेगियरिज्म. ऑथर ए हैज टेकन फ्रॉम दिस 2-3 sentences and has put in his own written manuscript. Okay, this is called the direct plagiarism. Got it? Then verbatim plagiarism means the copying text from source and pasting it directly into our own account, own document or own article without giving proper credit. What author A had done here? Author A has written one article and he has taken some matter that the prevalence of AD means atopic dermatitis is estimated to be 15 to 20% in children and 1 to 3% in adults. Author has put this prevalence from this article. Okay, actually one article has already published of that particular prevalence of particular disorders, and author A has copied this matter from this article. But what author A has done mistake means author A has not giving any proper citation or any proper credit to these original authors. Okay, यहाँ पे सोर्स लिंक दिया है. इस ऑथर को विदाउट क्रेडिट देते हुए, विदाउट साइट करते हुए ऑथर ए ने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है और उसका कॉपी पेस्ट किया. दिस इज कॉल्ड एज वर्बैटिम प्लेगियरिज्म. ओके, सो हाउ कैन यू अवॉइड दिस? You have to give one citation for this particular author, particular articles, so you can avoid that thing also. Now we will see paraphrasing, means the rephrasing a piece of text in your own words. किसी और का सेंटेंस, किसी और के डायरेक्शन, किसी और का रिजल्ट्स, किसी और की फाइंडिंग
लेकर हम लोग हमारी लैंग्वेज में लिखे मीन्स, बट दैट इज ऑल्सो विदाउट साइटेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेगियरिज्म. ओके, उसका लेना पर उसको साइट न करना. Most of authors, most of researchers do such kind of plagiarism. So paraphrasing without crediting original author is a form of plagiarism because you are representing or presenting someone else's ideas as if they were your own. किसी और का प्रेजेंट करना पर आप बता रहे कि ये हमारा है. ओके, तो इसका हम लोग एग्जांपल देखा है ऑलरेडी. सो जैसे अभी आप पैराफ्रेजिंग का कैसा होता है, ये जो यहाँ पे देखा है आपने लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट किया है किस आर्टिकल से. यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 50% सिमिलरिटी, एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एडाप्टेड. दिस इज आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड इन पर्टिकुलर जर्नल एंड अवेलेबल ऑनलाइन. एंड नेक्स्ट अनदर आर्टिकल, एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एडाप्टेड. बोथ आर डिफरेंट टू आर्टिकल्स एंड आई हैव टेकन some prevalence, some sentence from one article and one from other from this article. So after checking or after putting this article or matter into plagiarism checking software, this is showing that 100% plagiarism. This is called a, you can see this matter and you are, will get the result of 100% plagiarism. So after paraphrase matter, जैसे आपने वो matter को paraphrase किया यहाँ पे, although the prevalence of attachment is taken into account, and after paraphrasing there will be no plagiarism. You can see here 0% plagiarism. Okay, this is the matter, and after putting this into the software.duplicatechecker.com, you will find 0% plagiarism. What I have did, just I have taken that matter from that article, I have done the paraphrasing, and after that I am getting 0% plagiarism and 100% unique. But I need to put citation of that particular article, particular author. Otherwise, this is also plagiarism. So I need to put citation for this matter, but I am putting their word in other by making paraphrasing. Now the matter is 100%. Got it? And now we check the self-plagiarism. Self-plagiarism occurs when author submit his or her own previous work and mixed part of previous work. Means कुछ parts, partial parts. या फिर जैसे को वैसे, जैसे मान लो मैंने MD/MS जो डिसर्टेशन किया है उसी को मैंने PhD में लेकर वही पब्लिश किया है करना. मींस वही मैटर, वही सेम रिव्यू या फिर सेम रिजल्ट फाइंडिंग आई एम गोइंग टू पब्लिश इन माय PhD डिसर्टेशन. दैट इज सेल्फ प्लेगियरिज्म. और समटाइम व्हाट हैपन, if I have done my post graduation or my PhD for that dissertation, I have already published one article and I am also again taking some part of from that published article and I am now wanted to publish second article. So that is the self plagiarism. So as per UGC notification dated on 20 April 2020, reproduction in a part or whole of one's own previously published work without adequate citation and proper acknowledgement and claiming the most recent work as a new one and original for any academic advantage amount to text cycling, and that is also known as self plagiarism. And this is not acceptable. Kindly note that things. So and if you want to put that citation also, but that citation will not add any number or percentage in individual citation index or H index that is provided by the Google. That will not be counted as a percentage or point for the H index. You can see detailed information here. I have given link. I will put it later. The UGC guideline. Then this is the patchwork plagiarism. थोड़ा लेके उसको एक अपना आर्टिकल बना लेना. Patchwork plagiarism is also called mosaic plagiarism. Means copying phrases, passages, some ideas from different sources, different articles, and putting them together to create a new text, new articles. So here you can see there are some sentences, some phrases, some words are taken from different articles and you have prepared one article. Yeah, just like these shirts, taking some pieces of different clothes and making that new shirts. Okay. So sometimes this is also happen that accidental plagiarism. What happened? In accidents happen, but it does not excuse you from the consequence of plagiarism. गलती से हो गया हम लोग बोलेंगे, but that is also you are doing some offense, academic offense. These are the top 3 plagiarism accidents that can be happen if you are rushed to complete your paper. Sometimes what happen, after taking reference from some other article, we miss to cite or forget to cite that article or that source, or sometimes we not citing that paraphrase information or incorrectly paraphrasing. This is called as a accidental plagiarism. गलती से हो गया, हम लोगों ने cite करना भूल गए उसको properly
रेफरेंस देना भूल गए. नेक्स्ट, अब ये तो हो गया पैराफ्रेजिंग, सॉरी, प्लेगरिज्म के टाइप्स. सो नाउ how we can avoid the plagiarism in our own article, own dissertation, or own thesis. If you are worried about the plagiarism, you can use the plagiarism checker software. Then paraphrase correctly. Sometimes what happened, if you want to make it paraphrase, but sometimes some people forget to make it perfectly. So paraphrase correctly, cite properly. Sometimes we also miss citation, proper quotation. Dr. Chetan will highlight on that things, how to cite. There are some plagiarism checker softwares are available online. First is Dupli Checker, small SEO tools, plagiarism checkers, pro writing ad, Grammarly. I have given here list. You can check, take a snapshot also. To text, Gurkund, Turnitin, check for flags, Scribble, and there are some paraphrasing tools are available. There are some paraphrasing tools are available where you can copy your material and you can paraphrase that things. Okay, so like a Grammarly, Qboard, Paraphraser, Paraphrase Online, Spinner Chief, Spinboard, Dupli Checker. Some softwares which are provide service free of cost, and sometimes they also provide paid services. Okay, these are softwares. So now we will see any legal point of view. What if someone has done the plagiarize some content in their article? Okay, got it. So what is the legal point of view plagiarism? So we will see what is the copyright first. Actually, Copyright Act 1956, 57, 14 of 57 article describe that under Section 3, Copyright Act protect literary work, dramatic work, musical work, artistic work, cinematograph, sound recording. अगर हम किसी का लिटरेचर वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क या आर्टिस्टिक वर्क हम लोग हमारा बोल के करते हैं तो दैट इज फॉल अंडर द कॉपीराइट एक्ट एंड ऑल ओरिजिनल वर्क्स come under the Copyright Act. So you will also liable for the Copyright Act. So minimum punishment for infringement of a copyright is imprisonment for 6 months. अगर किसी का आर्टिकल आपने चुरा लिया और that is proved, then you will be punished for the 6 month jail with minimum fine of 50,000. In case of second or subsequent conviction, the minimum punishment is imprisonment for 1 year and fine up to 1 lakh. So please be refrain from such kind of things. Never copy from someone work, someone material, internet, because you will fall in trouble. So this is the Copyright Act. And another is intellectual property rights, IP rights. This is for brand, inventions, designs, or other kind of creation which person or business has legal right over. Suppose someone has taken intellectual property rights on particular things, you cannot copy his or her work. Okay, what are that intellectual property rights? First is the copyright, that book, song, film, web content. Patent is also one thing that protect commercial invention. That, for example, new business product, designs that protect designs as drawing, computer models, mobile models, trademark, sign, symbol, logos. Means you cannot copy these such things. If someone has trademark his
own logo of hospital or academy or company, you cannot copy that logo or symbol or words as it is, because that is a punishable offense. And for plagiarism, the University Grant Commission has given some penalty that we will see in the next slides. University Grant Commission has notified by one regulation published in 2018, that is 23rd of July 2018. UGC has published some, definition of plagiarism, what is the researcher and what is the level of plagiarism. We will see that. What is the plagiarism according to UGC? That means the practice of taking someone else's work or idea or passing them as own one. किसी और का idea, किसी और का work लेकर हमने बोलना that I have done myself. Researchers mean the person conducting academic or scientific research in the higher educational institution. And script include research paper, thesis, dissertation, chapter in book, full-fledged books, or any other similar work submitted assessment for opinion leading to the award of masters in MD/MS and research level degree, that is PhD, or publications or electronic media by student, faculty, researcher, staff of an higher education institution. तो हम लोग सब इसमें आ गए. If you want to publish article, if you want to publish thesis, if you want to publish any dissertation for the MD/MS or the PhD or Master of Public Health, such kind of postgraduate degree, or you are publishing that your matter into electronic media, that all come under the script. What are the exclusion for plagiarism? Assignment. If you submission of assignment का कुछ कर रहे होंगे, term exam, exam papers, that will be not fall under the plagiarism. Even you have copied same matter from a book and written in the assignment, or written in the exam papers, or submitted a project report or coursework, or you have written essay or answer script, this will not fall under the plagiarism penalty. So what is the level of plagiarism? Level 0 is the similarity up to 10% or minus. UGC has accepted up to 10% plagiarism. कोई भी आप आर्टिकल, डिसर्टेशन, थीसिस लिख रहे हो तो उसमें 10% आपको अलाउड किया है, but it should be less than 10%. Okay, always that will be fall under the level 0. Then level 1, that is similarity about 10% or below 40%. That is the level 1 similarity. And UGC has not specified the penalty and level wise also. That we'll see in the next slides. Level 2 similarity, that is plagiarism, is 40% to 60%. Above 40, less than 60 is the level 2. Level 3, similarity above 60%. That is a severe level of plagiarism. So what is the exclusion from the plagiarism? Means all quoted work reproduced with the necessary permission, attribution. Means if you are, suppose you have taken the some data from report from the ICMR, WHO, UNICEF, that will be not fall under plagiarism, because you cannot change the report finding of the NIH, UNICEF, ICMR, WHO, or CCRS. All the reference bibliography, table, content, reference, acknowledgement are not fall into the plagiarism. All generic terms, laws, standard symbols, standard equations mean our Sanskrit quotation from various Sanhita Nigantu that do not fall or never fall into a category of plagiarism. But the research work carried out by student, faculty, research staff shall be based on the original idea, which shall include abstract, summary, hypothesis, observation, result, conclusion, recommendation only, and shall not have any similarity. It shall exclude from common knowledge consideration up to the 14 consecutive work. 14 शब्द एक साथ अगर आते हैं तो that is a plagiarism. It should be less than 14. And what is the penalty? This penalty is imposed on the students pursuing the studies at level of master or research program, means MD/MS, postgraduate program, and PhD program. On researcher, faculty, staffs in any higher education institution will fall into the penalty criteria. And what is the submission of thesis and dissertation जो आपने किया है, तो उसका जो level 0, उसके लिए minor similarity, no penalty. Up to 10%, you will have no any penalty. If your article dissertation fall into the category of level 1 similarity, that is a 10% to 40% plagiarism, then the university may ask to submit a revised script, or sometimes international journal, national journal, PubMed index journal, they will ask you to submit a revised script within a stipulated time. They will give this, suppose 1 month, 2 months. If your article or dissertation or thesis found 10 to 40% plagiarism. If suppose your dissertation article found 40 to 60% plagiarism, 40 to 60% plagiarism, then the penalty will be, they shall be debarred from the submitting revised script for a period of 1 year. Okay.
they will debar you for 1 year if your dissertation or manuscript found the level 2 similarity, that is 40 to 60%. And if your article or dissertation or thesis found more than 60% plagiarism, that is level 3, such students, such faculty registration for that program shall be cancelled. Got it? So remember the level of penalty. Even if you are faculty, there will be some disciplinary action will be taken on you by the university, or your recognition of PhD degree or MD degree may be cancelled if your dissertation thesis will found more than 60% plagiarism. Penalty or repeated plagiarism, a student shall be punished for plagiarism of one level higher than the previous level of committed by him. अगर कुछ मान लो सेकंड टाइम आपने सबमिट भी किया है और रिपीटेड प्लेगियरिज्म आ गया तो उसका 1 लेवल आगे का आपको पेनल्टी मिलेगा. एकेडमिक रिसर्च के लिए ये है कि shall be withdraw manuscript if the level 2 found, shall be denied for right to 1 annual increment, shall not be allowed to be a supervisor to any master degree, MPhil degree or PhD degree, or the university will not allow you any student or scholar for the period of at least 2 years. These are the penalty for the academic faculties or research. Okay. Now, what is the MHU's perspective of the thesis plagiarism? Every student submitting draft of thesis dissertation shall submit an undertaking of indicating the document has been prepared by him or her. It is original work under the research work from the other sources has not been included except the citation or example quoted in, and it is free of plagiarism. University has given guideline and provided an annexure 18 that student has to fill and signed by the concerned guide, and that student has to declare that my work has no any plagiarism and it is a free of plagiarism. I will show that annexure also. So university will, otherwise university will take action according to the UGC guideline. And each supervisor shall submit certificate indicating that the work done by the researcher under him or her is a plagiarism. Even guide has also need to submit a certificate to university stating that this work is original. Okay, and there is no any plagiarism, or that is a plagiarism free manuscript. Every research center shall develop their own anti-plagiarism policy as per the guideline given by the university, or sometimes university has to maintain a website also, or sometimes they have to develop or purchase a software for that checking the plagiarism. And in case of plagiarism in the PhD scholar, the university will punish by the way of withdrawal of the dissertation or PhD degree, even if already awarded, as well as is liable for a legal action under the relevant provision. If suppose you have copied material and you have taken that material and put in your dissertation and you submitted that dissertation to university, the university will cancel your degree also, or cancel it. University will cancel your registration for the postgraduate as well as the PhD degree also. Yeah, we will give the chance after ending the session for the question answer session. Don't worry. So, what is the process of verification by the MHS? Research work in the thesis, dissertation, or which shall be verified through the software or by any other manner as a policy decided by the university. And after the receipt of satisfactory report through the software from the expert or the candidate shall be eligible to submit the thesis. University क्या करेगी कि university proforma उसका मांगेगी. University will ask the plagiarism report, whatever the dissertation or article or PhD dissertation you have submitted, and after checking that report, if the university or examiner will satisfied, then only university will accept your dissertation or thesis. Otherwise, even those who are writer of a book, the university also asks the plagiarism report for the textbook also. So thank you. If any question, you can ask now. The people have asked the question. Yeah, Dr. Shitiza ma'am has asked the question that the please suggest the name of plagiarism checking software that are shared. I have shared in my slide. I will show that slide also. And Dr. Khyati is asking. 1 minute. I will show. Hello. On करना. Hello. Yes. These are the softwares for plagiarism checking.
as well as there are some paraphrasing tools. Yes. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. Yes. Hello. Yes, yes, ma'am. Yes. Yeah, anybody can We ask have the some question by raising your hand. Yes, We yes, have Dr. some Khyati. questions here. Sir. Yes, yes, Dr. Khyati is asking question. Yes, Dr. Khyati, ma'am. Yes, unmute yourself. You can ask the question. Raise your hand. You just unmute yourself, and you can ask the question. Yes, Dr. Ajay sir, you can ask. Dr. Priyanka, just unmute yourself and you can ask the questions. Hello. Yes, Sir, plagiarism checking software. Please tell us details. yes, yes. I will also show you online. Yes, my screen is visible, na? Hello. These are some. I have just shown one thing. Duplichecker.com. I have shown a slide in there. In that slide, there are 10-15 software for the plagiarism checking as well as the paraphrasing tools. This is one of the software, Duplichecker. This is online available free software. You can take any matter. Just for example, I will take some matter from internet, and I will put that matter into. Just I will show you the demonstration here. Suppose I have taken this. So your screen is not visible to us. Okay, one second. I will. Yeah, now this is a tool duplichecker.com. Now screen is visible, na? Yes, sir. Yes, yes. I have taken some material from internet, and now here I will put and will paste here. Copy and put. I will take some more material. Yes, I have taken some material from the internet and putting this material into this software, that is duplichecker.com. And now I have to just click on I'm not robot and check plagiarism. So this software will show you the percentage of plagiarism as well as also generate this software will also generate a report for that plagiarism. So now we will check it, what percentage of plagiarism is there. Is asking to capture. 1 second. First you go to Google, type a Duplichecker, then the software will be open here. In this particular field you have to paste the material and you have to check captcha and check plagiarism. Click on check plagiarism, then this software will find the plagiarism percentage as well as this software also generate the report. So we will wait for 2-3 minutes. It will give the report as well as the percentage of plagiarism also. And if there is some percentage found, you can paraphrase these sentences or you can write in your own wording and you can avoid percentage of plagiarism into particular matter. So this software is scanning the matter. So now this is online and some software are paid. Yeah, here you can see this near about 100% has been scanning has been done by this software duplichecker.com, and within 1 to 2 seconds we will have the percentage of plagiarism as well as the report. Okay, just wait for hardly 10-15 seconds. Yeah, got it? Yeah, here is 100% plagiarism. Why this happened? Because I have taken the material from internet. This you can see here. I have taken some material from here, some material from here. So software is showing that
100% plagiarism. Got it? And there is a report also, download PDF report. You can download the report also. So your matter contained 100% plagiarism because that matter has taken from the internet sources. Okay. So this is the report I will download here and I will show you. Okay, this is a 100% plagiarism. If you paraphrase this material and after paraphrasing, if you put this material into software, that will also help to reduce the actual percentage of plagiarism. So now we'll see the report. Yeah, this is the report. Duplichecker, prepared by Duplichecker software and match sources. That software has given from where you have taken that matter. There are two. I have copied that matter from two websites, two source, and it is a 100% plagiarism matter. Got it? Got it, Dr. Priyanka? Yes, sir. And the software I have already given in the slide. So please Next share question. that screen again. Yes, 1 minute. Yeah, these are some software that is the first is Duplichecker. I have demonstrated you with the help of Duplichecker. There are several software available online. These are some paraphrasing tool also. Got it? Okay. Okay, sir. Thank you so much. Okay. Anybody have any question? Yes. हेलो Yes. Yes. सर मेरी आवाज आ रही है Yes. Yes. सर आई एम डॉक्टर ख्याति फ्रॉम पारुल यूनिवर्सिटी वाघोडिया Yes. वडोदरा Yes. सर मैं रोग निदान की स्टूडेंट हूँ और जी। हम लोग जैसे सभी स्टूडेंट जैसे कि रिसर्च थीसिस के ऊपर काम कर रहे हैं जी। तो मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे पूछूं तो अगर कोई हम लोग अगर पहले एक एप्लीकेशन या कोई इंस्ट्रूमेंट है जो पहले सीनियर्स ने किया हुआ है उस पे कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं तो जी। कुछ डेटा जो शुरुआत का डेटा रहेगा या उसकी डिजाइन रहेगी वो सब उसका जो सेम था वो सेम ही डिटेल आएगी सिर्फ जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हम लोग डालने वाले वो सिर्फ अलग रहेगा तो ये केस प्लेगियरिज्म के ऊपर जाएगा वैसे मैंने बोला ना कि जैसे दूसरे का हम लोग अगर ले रहे हैं सेम टू सेम तो दैट विल बी फॉल इनटू डायरेक्ट प्लेगियरिज्म और समटाइम इट्स पैराफ्रेजिंग आल्सो आप जो मैटर उससे लेंगे उसको थोड़ा बहुत अगर आप बदल उसमें चेंजेस करते हैं तो दैट विल बी फॉल इनटू द पैराफ्रेजिंग प्लेगियरिज्म so you have to what you can do here you can paraphrase that material and sometimes make the changes in the finding as well as the results in your own words and wherever you paraphrase the matter that you have taken from that particular research you have to cite that dissertation thesis जो भी है उसको citation आपको देना होगा ओके सर पर सर मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं समझ लीजिए कि स्किन का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको अलग अलग डिसीज के ऊपर डेटा सबमिट करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे काम करता है यहाँ पे काम करता है तो उसकी डिजाइन और जो भी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो वो सब सेम रहेगा लेकिन जो पेशेंट डेटा रहेगा जो सैंपल साइज रहेगी उसका जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इसमें ये चेंजेस मिलते हैं वो ही सिर्फ चेंज होगा तो ये जो इंस्ट्रूमेंट that will be not fall into the category of plagiarism whatever the own text particular design particular characteristic of a particular machine अभी मान लो जैसे ECG मशीन का है हाँ you cannot copy the design of ECG machine okay एक डिजाइन अगर बनती है पर उसमें के जो फीचर्स है the features will be same फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर मशीन के फीचर्स है तो फीचर्स आपको लिखना वो सेम पड़ेगा बराबर है दैट विल बी नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्लेगियरिज्म बट व्हाटएवर द फाइंडिंग you will know what in your current research from the previous research that you have to cite that you have to write the proper predate or proper citation to your research work okay thank you sir thank you yes yeah Dr. Ketki you can raise your hand so that I can give you the best answer because you have ग्रुप वाले फोन कर रहा yes I have allowed you Dr. Ketki just ask your question Yes, I am audible, sir. yes Dr. Ketki you are audible Sir, what are the criteria for writing textbook on syllabus?
because look, when we try to write on some concept, for example from FMT, if I want to write detail on mummification or any this, so whatever are the findings are always will be the same. So what are the criteria for plagiarism, or Yes, what you can do two things. Either you just wrote your definition of mummification in your own word, like my plagiarism definition in the first slide. I have not taken that definition from any source. That's why I have checked that into plagiarism. Then there was a result of zero plagiarism. One thing. Otherwise, you can take the definition from the renowned author, eminent expert. Then you have to quote that definition with the particular name of author. Suppose, for example, Parekh has defined that mummification in his own word. You can take as it is, but you have to quote the definition by Parekh. Got it? okay. Yes, you have to quote that author name, textbook, and citation. That you And can. what about the okay, and what about the findings, sir? Which Because the finding? findings, yeah, the characteristics of, for example, characteristics of mummification, Yes. and that Yes. will be remain That same. that you can write in your own word by changing the sentences or sometimes make it paraphrase, but that should also within particular limit, because they are given you cannot take the 14 words subsequently, so you have to change that word. That you can do. Okay. And whatever the regarding shlokas or virus, you can take it as it is. You cannot change in a single word also, because UGC also mentioned that some literature that are standard, means our textbook like Sanhita, Charak, Sushruta, Bhagavad, that are standard for us. So we cannot change their slok, number, adhyaya, and the matter contained in this slok. So in that condition, where we can take it, but after transmission, is translation of that shloka, you can write in your own word. Suppose someone has already translated that shloka into his own word, that you cannot take as it is. You have to make it your own. Then that will be no plagiarism. Thank you, Yes, sir. doctor. Thank you, doctor. Yes. Due to some problem, I was disconnected. Now, Dr. Chetan will have session on the how to cite. Many people have that problem of citing and references. So, yes, anybody? There are some people who wanted. Yes, Dr. Chetan. Yes. Now I would like to invite Dr. Chetan Gulane for his session on the essential of referencing and citation. So Dr. Chetan will highlight on that how to cite a proper citation. Oh, yes, Dr. Chetan, proceed. Dr. Shilpa, can you please introduce Dr. Chetan? Yes, sir. Thank you, sir, for your Yes. valuable guidance Yes. on the topic plagiarism and UGC guideline. Next, our next speaker is Dr. C.M. Gulhane, sir. He is MD, PhD. He is a director, Ayurveda Research and Career Academy, founder, ARCA virtual expert based on artificial intelligence. He is the executive editor in chief of AyurScript Journal, author of the book Research Methodology, exclusive written for MD, MS, and PhD student. And he will deliver the session on the reference style and application of the software. So I request respected sir to start his session. Over to you, Dr. Gulane, sir.
Just Dr. Chetan, I is think there my is some screen problem. visible? Yes. Dr. Chetan, your screen is also visible. You are audible clearly. Yes. Okay, just a minute. Just let's start. Myself, Dr. Chetan Gulane. I did my MD and PhD from renowned institute, ITRA, Jamnagar. And now today's topic is essentials of referencing and citation. So let's start the topic. Thank you, Dr. Sundar, for giving me just chance to present myself. So these are journals where I work as a editor, International Journal of Indian Medicine and iScript. So what is reference? I have given the example like Incredible Hulk and Credible Hulk. You give to credit someone or to source, so it will be credible. Your knowledge is credible, and this is the just for fun. And today's topic is like objectives are what is the referencing or citation, why to cite or reference, when to cite, importance of citation, types of referencing style, Vancouver style in detail, and Ayurvedic references. Also, we'll discuss if time permits. So we'll discuss also the software also. Okay. So what are the software we can manage the citation? So I want to ask one question to everyone. So if you are in the academic, so how many of you are published your article in PubMed Index Journal or Index Journal, any Index Journal? Yeah, you can reply me and question and answer. Yes, I can see. Yes. Yeah. Though this PPT will be two-way communication, so I request. So now you can put your chat in chat box. So my question is, how many of you publish article in Index Journal? So many of you publish, I know that, but most of the time our article get rejected due to the incorrect citation. Most of the time, 80-90%, because we don't know the how to cite the article, how to give the reference. So most of the time our article get rejected in Index Journal. So if you want to publish in Index Journal, you should know the proper referencing style. So these are the session objectives. We'll start now one by one. So second is what is reference or citation? A way of giving credit to someone thinking, writing, or research. It is called citation or referencing. Referencing allows you to acknowledge the contribution of other writers and researchers in your work. See, when Charak also written the Charak Sahita, he also acknowledged the Agnivesh. He said that Agnivesh Krute Charak Prasisans Krute. The original Sahita is made by Agnivesh. He also, as we know that we are giving credit to Charak only, but he has given credit to Agnivesh. So if you are taking something, some matter from somewhere else thinking or writing or research, so you have to give the credits. You mark the material, you use it as citation. So if you mark in the like in your text, this 1, 2, 3, this is called citation, and in full identification, which is the journal, what is the article name, what is the page name, that is called the reference. So these are the citation or reference. So there are two terms used in the referencing. So why to cite the reference first? To credit source or information of ideas. So you have to always give the credit to someone. If you have taken something from someone, so you always give the credit. Reader can locate further information if required. So if you are writing on the obesity, okay, and if you are giving reference of some articles, and the readers also want to know what the
main article has written. So he can locate. If you give the proper reference, then he can locate the main article where you can take on the reference. To avoid the plagiarism, Dr. Sundar already told about the plagiarism. So if you, what is plagiarism? Plagiarism is nothing but the taking someone ideas or writing without acknowledging them or as it is. It is called plagiarism. So if you give the credit, like I have taken this from this side and you paraphrase it properly, so it will be non-plagiarized. Then validate arguments. If you are in the like Sandhya Sambhashana and everybody is arguing about the prevalence rate, prevalence of obesity is 2.5, everyone agree with it. Then if you give the proper reference, like WHO said that this one is the reference, and so it validates the arguments, increase and spread the knowledge. Also show the depth, breadth, and quality of your reading. If you are, if you are publishing the article, if you give the more references, it shows that you are that hard work you are taking for that article. Only 10-15 references is not sufficient. अगर आपने 50 या 100 आर्टिकल रेफर किए हैं और आपने उतने सारे रेफरेंस दिए, तो आपसे आर्टिकल से पता चल जाता है कि आपका जो आर्टिकल है वो कितना इम्पोर्टेंट है और उस आर्टिकल के लिए आपने कितने एफर्ट्स लिए. So when to cite, when there is direct quote, statistics, theories, fact, interpretation, or paraphrases, then you have to quote the use the references or use the references. So what is the importance of citation? This is the another point. क्या क्या importance हो सकते हैं citation देने से या किसी को ये करने से? तो एक तो है सबसे पहले कि impact factor. Everyone knows that कि what is impact factor? In comment section, can you tell me what is impact factor? Yes. What is impact factor? Or it is high impact factor means what is high impact factor means generally is good. तो impact factor कैसे निकालते हैं हम देखेंगे, ठीक है, इसका रेफरेंसिंग में क्या इंपॉर्टेंस है. दूसरा हम देखेंगे then what is H index? What is H index means जैसे हमने स्कोपस इंडेक्स जर्नल लिखा है, तो इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो जर्नल के लिए होता है स्पेसिफिक, लेकिन आपके खुद के लिए आपको देखना है कि आपको खुद को एवेल्युएट करना है कि आपका रिसर्च क्वालिटी या कितने पेपर आपने पब्लिश किए हैं या कितने क्वालिटी पेपर आपने पब्लिश किए, कितने लोगों ने आपको साइट किया, ये देखने के लिए आपको एच इंडेक्स आपका, तो इतना जिस ऑथर का एच इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा मींस ही हैड पब्लिश मोर आर्टिकल. एंड अनदर इज आईटीएन इंडेक्स आल्सो, दैट इज गिवन बाय गूगल स्कॉलर. तो किसी आर्टिकल के लिए आपको कितने बार आपको साइट किया. अगर समझ लो आपने एक आर्टिकल पब्लिश किया इन सुवर्ण प्राशन एंड 10 people has cited your article. Cited means 10 people has taken your article as a reference for their future studies or their articles. So you have been cited 10 times means your Google index is 1. मतलब आपके आर्टिकल, एक आर्टिकल को आपको अगर 10 बार साइट किया जाता है गूगल इंडेक्स, आपके अगर ऐसे ही 10 आर्टिकल है उसको 10 बार साइट किया जाए तो आपका गूगल इंडेक्स 10 हो जाएगा. तो वी विल सी द एग्जांपल सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर. समझ लो कोई जर्नल है जिसको आपके लिए इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है. सी इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज व्हेन यू आर पब्लिशिंग योर आर्टिकल, वैल्यूएबल आर्टिकल इन स्पेसिफिक जर्नल, सो यू शुड नो द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द प्रॉपर जर्नल. और वो इम्पैक्ट फैक्टर कौन निकालता है ये भी इम्पोर्टेंट है. मेनी कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोवाइड द इम्पैक्ट फैक्टर. तो समझ लो एक 2023 का एक जर्नल है, उसको अपना इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है. इम्पैक्ट फैक्टर निकालने के लिए उसको पिछले 2 ईयर में कितने बार उसके आर्टिकल पब्लिश हुए. जैसे 2021 में उसके 55 आर्टिकल पब्लिश हुए, इन 2022 49 आर्टिकल पब्लिश हुए, तो टोटल उसके 2 साल में 104 आर्टिकल पब्लिश हुए और अराउंड 637 टाइम्स उसके जो आर्टिकल्स है उसको दूसरे लोगों ने साइट किया है. तो व्हाट इज द इम्पैक्ट फैक्टर? इम्पैक्ट फैक्टर इज नथिंग बट द साइट ऑफ द रिसेंट आइटम्स एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश. तो उस जर्नल का स्पेसिफिक 2023 के लिए इम्पैक्ट फैक्टर हो जाएगा 6.125.
मतलब 23 का आपको निकालना है तो पिछले 2 साल में इसको कितने बार उसके आर्टिकल को साइट किया है ये आपको देखना है। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर समझ में आ गया। देन अनदर इज एच इंडेक्स। जैसे मैंने बोला ना, आपका आर्टिकल कितने बार पब्लिश हुआ है। जैसे एक आर्टिकल है, जैसे करण है, उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 111, उसको 2 लोगों ने साइट किया। ओके, तो उसका एच इंडेक्स हो गया 1। तो मतलब एक एटलीस्ट एक लोगों ने एक आर्टिकल से एटलीस्ट एक लोग ने उसका करना चाहिए। तो वहां पे 2 लोगों ने उसको साइट किया तो उसका एच इंडेक्स 1 हो गया। अगर उसने दूसरा आर्टिकल पब्लिश किया, उसको 3 लोगों ने साइट किया, तो उसका एच इंडेक्स हो जाएगा 2, क्योंकि उसने 2 आर्टिकल पब्लिश किए हैं तो उसका एच इंडेक्स हो जाएगा। लेकिन मिनिमम 2 लोगों ने उसको साइट करना चाहिए। ऐसे अगर वो तीसरा आर्टिकल पब्लिश करता है तो एटलीस्ट 3 लोगों ने उसको तीसरे आर्टिकल को उसको क्या बोलते हैं, उसको साइट करना चाहिए, तो उसका एच इंडेक्स 3 हो जाएगा। ऐसे उसने अगर 10 आर्टिकल पब्लिश किए तो 10th जो आर्टिकल है उसके 10th आर्टिकल को एटलीस्ट 10 लोगों ने साइट करना चाहिए, तब उसका एच इंडेक्स जो है एटलीस्ट 10 होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड मैंने दिया एग्जांपल, यहाँ पे अर्जुन अर्जुन का पहले आर्टिकल को जब पब्लिश किया उसने 4 लोगों ने साइट किया तो एच इंडेक्स 1 हो गया। ठीक है, दूसरे आर्टिकल को ऑल्सो 2 हो गया। लेकिन तीसरा आर्टिकल था, मिनिमम उसको 3 लोगों ने साइट करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया, तो उसका एच इंडेक्स 2 ही रहेगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने पब्लिश करते हैं ये आपको मायने नहीं रखता आपको। तो जो भी आर्टिकल आपने पब्लिश किए, जितने भी आर्टिकल आपने पब्लिश किए, उतने बार उसको उसने साइट करना चाहिए लोगों ने उसको, तो आपका एच इंडेक्स बढ़ेगा। तो यू नो दैट कि अगर आपने एच इंडेक्स ज्यादा है, मतलब आपके ज्यादा लोग आपको साइट कर रहे हैं, न्यू जो भी न्यू आर्टिकल आ रहे हैं आपको उसके ज्यादा लोग साइट कर रहे हैं, तो दैट इज एच इंडेक्स। ऑल्सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे करण ने 2 आर्टिकल पब्लिश किए, ठीक है, तो एक ही आर्टिकल को 10 लोगों ने साइट किया तो एच इंडेक्स उसका 1 हो जाएगा। अर्जुन ने 3 आर्टिकल पब्लिश किया और दो आर्टिकल के उसके 10 के ऊपर उसको साइट हुआ है, तो उसका जो है एच इंडेक्स 2 हो जाएगा, sorry, ITN index 2 हो जाएगा। So this is for example only, and more detail you can get on the website also. So type of references, there are generally we can use like YouTube, anything, any source we can use as a reference. But in academic journals, we generally use articles, book references, and internet references for the citing the references. So what are the types of references? That is important. First type is like parenthetical citation. It is identifying the details of source, usually the author, last name and publication date plus page number. तो पैरेंथेटिकल साइटेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको ऑथर का नेम मिलता है। जैसे आपने बहुत बार आर्टिकल देखा होगा, वहाँ पे 1 2 3 नंबर नहीं लिए रहते, वहाँ पे कभी कभी ब्रैकेट में ऑथर का नेम या पेज नंबर या ईयर लिखा ही दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड एज पैरेंथेटिकल साइटेशन। ठीक है, सेकंड होता है न्यूमेरिकल साइटेशन, जहाँ पे आप नंबर देते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में 4 रेफरेंस है तो 1 2 3 4 आपने देते थे, सो इट इज इन द सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया रेफरेंस और इसके ऊपर आपने 1 दे दिया, तो दिस इन द ब्रैकेट आपको जो न्यूमेरिकल्स नंबर है, अरेबिक नंबर है 1 2 3 4, वो आपको लिखना है। देन थर्ड टाइप इज नोट साइटेशन। मोस्ट ऑफ द बुक्स आपने देखा होगा, बुक्स जो होते हैं जैसे लॉ बुक्स है या फिर मोस्ट ऑफ द बुक, वहाँ पे साइटेशन उस पेज के नीचे ही दिया जाता है, ना कि चैप्टर के लास्ट में। जो भी पेज के ऊपर जो भी रेफरेंसेस आते हैं उसका साइटेशन आपको उसी पेज के नीचे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, और मे बी समटाइम्स यू कैन ऑल्सो यूज द सिम्बॉल्स। ठीक है, तो सिम्बॉल्स भी आपको मिलते हैं, रोमन नंबर्स भी मिलते हैं, ABCD भी आपको मिलता है। तो नोट साइटेशन में आपको कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, बट इट इज इन द सेम पेज, लास्ट में आपको हो जाता है। So this is the most important table you should remember, because see we are only using the Vancouver style in medical field, but PubMed में आप जाएंगे तो आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इतने जर्नल नहीं दिखेंगे, लेकिन यू कैन पब्लिश इन एनी जर्नल। तो हर एक जो जर्नल है, जैसे कोई ह्यूमैनिटीज पे है, कोई सोशल साइंस पे है, तो हर एक की गाइडलाइंस अलग अलग होती है। तो पैरेंथेटिकल साइटेशंस जो है ये मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, शिकागो स्टाइल एंड हार्वर्ड स्टाइल, ये जो आते हैं ये पैरेंथेटिकल साइटेशन यूज करते हैं। मींस
रेफरेंस देते समय साइटेशन में आपको वर्ड में आपको उसका नाम दिखेगा, जैसे MLA स्टाइल में आपको उसका नाम लिखेगा और पेज नंबर दिखेगा, जैसे डेविडसन एंड 155, डेविडसन बुक इसने यहाँ यूज किया है तो डेविडसन की। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, यहाँ पे क्या होता है, ऑथर नेम प्लस ईयर आपको यहाँ पे मिलता है। शिकागो में ऑथर नेम प्लस ईयर, हार्वर्ड में भी आपको ऑथर नेम प्लस ईयर, बट यहाँ पे कॉमा आता है, ये भी आपको देखना है कहाँ पे कॉमा है कहाँ पे नहीं है। न्यूमेरिकल साइटेशन, तो वैनक्योर स्टाइल जो है ये यहाँ पे हम न्यूमेरिकल साइटेशन यूज करते हैं जो भी हमारे मेडिकल में पब्लिश होते हैं। देन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, दिस आल्सो यूज द numerical citation. In like footnote citation, we generally use like Blue Book or Chicago Notes. They use generally these guidelines. So these are the guidelines. Okay, manicure guidelines. These are the MLA guidelines. These are the guidelines used by different types of referencing style. So what is parenthetical citation? यहाँ पे जैसे मैंने paragraph दिया है, and we have given that like this author has given the in-text citation, यहाँ पे author का name plus page number. Don't worry, I will give the references also and we'll discuss in between. Don't worry. If you have any question, you can ask me. And another is like, अगर एक ऑथर है तो आपको क्या लिखना है, एक ही नाम और पेज नंबर। 2 ऑथर है तो आपको बीच में एंड लिखना है, और 3 ऑथर से ज्यादा है तो we can just put at all and the page number. So this is the MLA style, Modern Language Association. This is the APS style, like American Psychological Association. यहाँ पे आपको ऑथर का नेम एंड ईयर दिया जाता है. Sometimes they use also page number also. So these are the guidelines when और numerical citation में हम क्या करते हैं, 1 to 3 देते हैं और लास्ट में हम प्रॉपर रेफरेंस देते हैं. So it is in the अरेबिक नंबर्स 1 2 3. आपको ABCD यूज नहीं करना है, ना कि रोमन में 1 2 3 यूज करना है. यू हैव टू गिव द प्रॉपर रेफरेंसेस ऑन दिस. ओके, देन फुटनोट. यहाँ पे फुटनोट साइटेशन मैंने दिया है, जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 दिया है और उसी पेज में लास्ट में आपको जो है उस रेफरेंस का आपको मिल जाता है. तो आप यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हो, या फिर ABCD लिख सकते हो, रोमन में 1 2 3 लिख सकते हो, या फिर कुछ सिंबल भी यूज कर सकते हो, और लास्ट में पेज में आपको वहीं पे आ जाए. दिस इज द फुटनोट साइटेशन जनरली यूज फॉर दी बुक्स. So this diagram is also useful, like when you are, because जो भी मैंने रेफरेंसिंग रूल्स बोले, जो भी हमने गाइडलाइंस बोला, जैसे हार्वर्ड है या फिर वैनक्योर है, ये स्पेसिफिकली यूज होते हैं. जैसे इकोनॉमिक्स है तो वो ज्यादा करके हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल यूज करते हैं. इंजीनियरिंग वाले IEEE, ह्यूमैनिटी स्टडी वाले शिकागो एंड हार्वर्ड और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. लॉ स्टूडेंट्स use like Blue Book. Medicine students use American Medical Association, National Library of Medical Association, and Vancouver style. Political science wale APSA, psychology wale American Psychological Association. So these are the guidelines. So these guidelines are used in specific fields. ठीक है, तो जनरली हम मेडिकल के लिए Vancouver style, National Library of Medicine and अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन वाली गाइडलाइन जो है यूज कर. तो लेट्स सी वन बाय वन. तो वन बाय वन देखने की जरूरत ऐसा है क्योंकि सी, अगर आपको पता है, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं कि मेडिकल फील्ड में तो हम करते हैं, लेकिन आपको मेडिकल फील्ड छोड़ के किसी और फील्ड में जैसे करना है, जैसे ह्यूमैनिटी स्टडी में हम देखते हैं कि MLA स्टाइल यूज होता है. तो यहाँ पे क्या करना है, इन टेक्स्ट में आपको क्या देना है, रेफरेंस ऑथर नेम प्लस ऑथर लास्ट नेम प्लस पेज नंबर, ये आपको ऐसे लिखना है और आपका रेफरेंस आएगा ऐसे. तो दिस इज द कीवर्ड्स, लाइक यहाँ पे पहला जो आएगा ऑथर नेम, यहाँ पे आपको ऑथर का लास्ट नेम फॉलोड बाय ऑथर फर्स्ट नेम. ठीक है, तो हिलैक मैट इज हिज नेम एंड हिलैक इज सरनेम. देन यू हैव टू पुट द आर्टिकल टाइटल नेम. देन इन पर्पल कलर I have shown that the journal name. So journal name also always in italic. तो जो यहाँ पे जो italic means आपको italic करना है उसको.
वॉल्यूम एंड इशू. वॉल्यूम मीन्स 43 वॉल्यूम इशू. इशू मीन्स कौन सा, जैसे एक ईयर में जैसे कोई क्वार्टरली जर्नल्स है तो 4 इशू पब्लिश होते हैं. मंथली जर्नल है तो 12 इशू यहाँ पे होते हैं. तो ये फर्स्ट इशू है. देन कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, ईयर, देन पेज नंबर, एंड दिस इज कॉल्ड एज DOI. व्हाट इज DOI? DOI इज नथिंग बट डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर. तो जैसे हमारी फिंगरप्रिंट होती है वैसे ही DOI होता है. वहां पे आपको हर एक आर्टिकल के लिए स्पेसिफिक होता है. समझ लो कोई आर्टिकल है और आपको मिसप्लेस हो गया, आपको मिल नहीं रहा है इंटरनेट पे, अगर आपका उसका DOI पता है तो डायरेक्टली आप उस DOI के लिंक को क्लिक करके कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द जो जर्नल है, पबमेड जर्नल है या फिर इंडेक्स जर्नल है, ये DOI प्रोवाइड करते हैं. तो DOI इज गुड. अगर आपके जर्नल में जो भी जर्नल है उसमें अगर DOI है, means it is authenticated, the article is authenticated, the journal is authenticated, and you can, this journal or article is unique. So you can see the, so how can you remember this? So there is one trick. There is a, यहाँ पे हम शॉर्टकट बनाए हैं, यहाँ पे ATJVIYP. ATJ मतलब ऑथर, टाइटल, जर्नल, V means volume, issue, year, and publication. Sorry, page number. So this is the shortcut. You can remember this. So another is, I will give you the example. So you can find the what is the wrong in this reference. So this is the MLA style reference, and you आपको गलतियां ढूंढना है इसमें, क्या क्या गलती है. ठीक है, तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं क्या आपको गलतियां दिखती है इसमें. जो भी हमने अभी रेफरेंस स्टाइल देखी है उसमें आपको क्या गलतियां दिख सकती है, क्या गलतियां दिख रही है. एनीवन? Yes, yes. Ashu is saying year is not at wrong place. Very good. Publication date. Yes. Anyone? Yes. Year. Yes. Year should be. Lalit said. Dr. Lalit said year is not in the specific. So first is आपको पहले आपको देखना था नाम. मैंने क्या बोला था आपको, पहला ही नाम आपको कंप्लीट लिखना है. जैसे यहाँ पे गुल्लाने हैं तो NPA इनिशियल नहीं लिखना है. गुल्लाने के बाद उसका जो नेम है वो आपको, जो MLA स्टाइल है आपको कंप्लीट लिखना है. तो फर्स्ट इज नेम, देन ईयर. यहाँ पे ईयर यहाँ पे डायरेक्ट आ गए. ईयर आपको पहले ये वॉल्यूम के पहले लिखना था. ठीक है. देन पेज नंबर आपको कंप्लीट लिखने थे. यहाँ पे मैंने पेज नंबर कंप्लीट नहीं लिखे, यहाँ पे आपको पेज नंबर. तो प्रॉपर जो रेफरेंस है, दिस इज लाइक दिस वन, गुल्लाने नितिन पी एंड, क्योंकि दो ऑथर है तो एंड आपको बीच में लिखना है. मौलिका श्रीपाद, आर्टिकल नेम, देन जर्नल नेम विच इज इन द इटैलिक, वो बराबर है आपका. देन वॉल्यूम, ईयर एंड पेज नंबर आपको कंप्लीट. This is the correct. Then we'll see the another example like this called as APS citation style. Okay. तो APS citation में आपको सेम क्या करना है इसमें आपको, लेकिन यहाँ पे इनिशियल्स आप यूज करना है. पहले ऑथर का सरनेम जुरा है जो भी है, और इनिशियल आपको लिखना है. देन ईयर आपको यहाँ पे सेकंड टाइम पे आएगा ईयर. APA में ईयर आ जाता है नेम के बाद. देन article title and journal title which is in the italic, then volume or page number, or sorry, volume and issued and page number. ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाता है. तो इसका याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे इसको. author AYTJVIP. A means author, year, तो title, journal name, volume, issue and page number. VIP पेज नेम. तो इस तरह से आप इसको यूज करो. और इंडेक्स में आप कैसे लिखेंगे, ऑथर नेम प्लस ईयर, बिकॉज दिस इज अ APS टाइम. तो आपको इंडेक्स में आपको 1 to the नंबर नहीं लिखना है. यहाँ पे आपको ऑथर नेम और ईयर लिखना. तो कैन यू फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन दिस, एनीवन? यस.
can put in the chat box what are the mistakes. What are the mistakes? No, this API style, so you don't need to देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, API स्टाइल है तो आपको यहाँ पे इसमें आपको फुल नेम लिखने की जरूरत नहीं। API स्टाइल में हमेशा आपको ऑथर नेम और इनिशियल नेम लिखना है, तो ये नेम तो बराबर है। देन वेरी गुड, जर्नल नेम शुड बी इटैलिक, वेरी गुड। हाँ, ईयर में आपको साइटेशन लिखा है, वेरी गुड। तो व्हाट आर द एंड आपको लिखना था, 3 ऑथर हो गए, 3-4 ऑथर हो गए, तो आपको बीच में आपको एंड लिखना है। ये हो गया एक साइटेड, यहाँ पे ईयर के बराबर, ईयर तो बराबर लिखा है यहाँ, लेकिन साइटेड लिखने की जरूरत नहीं था। देन जर्नल नेम शुड बी इटैलिक, जर्नल नेम शुड बी इटैलिक, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस, ये इटैलिक में चाहिए था। देन एवरीथिंग इज ओके, सो दिस इज द करेक्ट स्टाइल। ओके, now we'll directly jump to the Vancouver style in detail. Vancouver style आपको डिटेल में देखना है तो हम पहले Vancouver style, because in medical field we generally use the Vancouver style. तो आपको Vancouver style is number referencing style commonly used in medical and science. Vancouver style was developed by International Committee of Medical Journal Editor. तो ये Vancouver नाम कैसे गिरा? Vancouver is a place in British ये पोर्ट, एक पोर्ट सिटी है, ये वहाँ पे जो गाइडलाइंस है इसकी बनी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ मेडिसिन मेडिकल जर्नल एडिटर, यहाँ पे इन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वैंकूवर स्टाइल। और यहाँ पे आपको नंबर्स देना है 1 2 3 4, नॉट ABCD और नॉट रोमन नंबर, ऑलवेज गिव द अरेबिक नंबर्स 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो भी हम जर्नल नेम लिखते हैं, ये आपको जो पबमेड का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है उसके रूल्स के अनुसार है, तो वी विल सी आल्सो दैट। ठीक है, तो जर्नल आपको फुल नेम नहीं लिखना है, आपको हमेशा उसका शॉर्टकट लिखना है। तो वैंकूवर स्टाइल लिखने से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, वन इज बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट एंड अनदर इज द पंक्चुएशन मार्क्स। वन वी सी द व्हाट इज बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट, व्हाट आर द पंक्चुएशन मार्क्स। So this is the reference. What is in the red color? Red color there is authors. So author is maximum 6 author लिख सकते हैं, और आफ्टर ज्यादा करके 6 author से ज्यादा है तो we can use the add-on. ऐसा नहीं कि 1 2 author लिख दिया और add-on लिख दिया। जनरली गाइडलाइंस बोलती है कि आपको मैक्सिमम आप 6 author तक लिख सकते हो, और 6 से ज्यादा है तो आपको add-on लिखना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कोविड में भी आपने आर्टिकल पढ़ेंगे, तो एक आर्टिकल मल्टी स्टेज या मल्टी सेंटर जो स्टडी होता है, 50 ऑथर रहते कभी कभी सिंगल आर्टिकल के, तो इस टाइम पे आप 6 ऑथर लिख के एडल लिख सकते हैं, 50 ऑथर लिखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जो रेड में है वो ऑथर नेम आ गए। देन आर्टिकल टाइटल, आर्टिकल देन ऑथर के बाद आता है आर्टिकल टाइटल। तो आर्टिकल टाइटल जैसा है वैसे लिखना है। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल में कभी कभी क्वेश्चन मार्क होते हैं, या फिर कॉमा होता है, या फिर सेमीकोलन होता है, तो जैसा है वैसा ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि वो आर्टिकल आपका नाम आपने उसमें कुछ कट करके लिख दिया, बड़ा नाम था इसलिए आपने कट करके लिख, नो। देन जर्नल नेम, यहाँ पे देखो पेडियाट्रिक सर्जिकल इंटरनेशनल, दिस इज द जर्नल नेम, तो इट इज इन द ब्लू कलर। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा उसको, पेडियाट्रिक सर्जरी इंटरनेशनल। तो ये शॉर्टकट आपको कहाँ पे मिलेगा? पबमेड में मिलेगा। पबमेड में आप जाएंगे तो वहां पे आपको हर एक आर्टिकल का मिलेगा वो, या फिर वहां पे हम जाएंगे देखेंगे कैसे ढूंढना है, आपको कैसे करना है। देन ईयर, देन में आपको ईयर लिखना है। देन वॉल्यूम एंड इशू, 25 1 इज अ वॉल्यूम एंड 1 इज अ इशू। एंड पेज नंबर, पेज नंबर आपको हमेशा जो है कंप्लीट नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे पेज नंबर है 445-4457, तो आपको कंप्लीट नहीं लिखना है, 47 ने कंप्लीट नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 7 लिखना है। तो जब भी आप वैंकूवर स्टाइल में रेफरेंसेस लिखना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करना है। तो दिस इज द शॉर्टकट फॉर दिस। व्हाट इज द शॉर्टकट? ATJYVIP इज ऑथर नेम,
author name, ठीक है, and another is correct title of article followed by the correct abbreviation of journal, International Journal of Indian Medicine, ये journal हो गया, then followed by year and volume and issue, and last is page number. So this is the correct bibliography के लिए. तो what are the punctuation mark? इसमें punctuation mark कहाँ पे यूज हुआ है? देखो, हर एक ऑथर के बाद यहाँ पे कॉमा है, जैसे डॉक्टर बावने भी फुल्ले आर, ठीक है. तो यहाँ पे आपने जितने भी ऑथर है उसको कॉमा से आपको ये करना है, एंड आफ्टर ऑथर आपको फुल स्टॉप देना है, ठीक है. देन जो भी आर्टिकल का नेम है उसके बाद भी आपको फुल स्टॉप देना है, और जो भी एब्रीविएशन है जर्नल का उसके बाद भी आपको देखना है. देन ईयर के बाद आपको सेमी कोलॉन देना है, दिस इज कॉल्ड सेमी कोलॉन, ठीक है. और वॉल्यूम और इश्यू के बाद आपको कोलॉन देना है, और जो पेज नंबर है उसको हाइफेन से आपको अलग करना है, ठीक है. एंड लास्ट में आपको फुल स्टॉप देना है. दीज आर द पंक्चुएशन मार्क. आप बोलेंगे सर व्हाई इट इज नॉट, इतना आप कौन देखेगा कि फुल स्टॉप दिया है नहीं दिया है? या इट्स मैटर व्हेन यू आर पब्लिशिंग फॉर एनी पबमेड इंडेक्स जर्नल, देयर ओन सॉफ्टवेयर्स. वो क्या करेंगे, आपके सब रेफरेंसेस कॉपी करेंगे और उनके सॉफ्टवेयर में डालेंगे, और उनको आपने अगर उसमें कॉमा या फिर जो सेमी कोलॉन नहीं दिया तो क्या होगा, आपको रेफरेंस को गलत बताएंगे, तो आपको क्वेरी आएगी कि यू आर रिटर्न रॉन्ग रेफरेंसेस, रॉन्ग स्टाइली रेफरेंसेस. तो वेरी गुड. इसमें आपको इसलिए आपको ये गाइडलाइंस पता चाहिए कहाँ पे क्या लिखना है. जनरली हम कहीं पे भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं, दे डोंट सी, बट इन इंडेक्स जर्नल और पबमेड इंडेक्स हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर. तो आपका अगर कॉमा भी गलत हो गया तो वो आपके आर्टिकल को जो रेफरेंस है उसको गलत बताएगा. तो आपको फिर से जब भी रेफरेंसेस लिखने के बाद, तो दीज आर द, तो आपको ये सब गाइडलाइन कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क कहाँ पे देना है, क्या रूल्स फॉलो करना है, यू शुड नो. So this is the journal, this is the book reference I have given. Why the book reference is little bit different? See, when you are using the books like Harrison, तो पूरा बुक हैरिसन ने नहीं लिखा है, हर एक चैप्टर उसमें का अलग अलग ऑथर ने लिखा. तो when you are using such books which जिनके हर एक चैप्टर अलग अलग ऑथर ने लिखे हैं, तो आपको रेफरेंस कैसे देना है? तो दिस इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर, जो भी ऑथर ऑफ द चैप्टर उसको सबसे पहले लिखना है. देन उस चैप्टर का नाम लिखना है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट ऑफ बाइनरी सिस्टम, ठीक है. देन जो मेन ऑथर है उसका नाम लिखना है, लाइक गुप्ता डीके एडिटर, वही एडिटर होएगा. एंड फॉलोड बाय द बुक नेम, कौन सी एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, कहाँ पे पब्लिश हुआ है, ठीक है, सिटी ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिशर, ठीक है, एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड डेट. So when you are using the book references, you have to follow this references style in Vancouver. This is the Vancouver style. आप जनरली देखते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं जैसे, लेकिन Vancouver style आप यूज करना है, और यू आर पब्लिशिंग योर आर्टिकल इन पबमेड इंडेक्स, हाई इंडेक्स जर्नल, तो आपको ये रूल्स फॉलो करना है. तो आई विल शो यू, दिस इज द वेबसाइट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन. तो मैंने बोला ना, हर एक जर्नल का आपको शॉर्टकट लिखना है. जब भी आप Vancouver स्टाइल यूज करते हैं तो यू हैव टू पुट द, तो यहाँ पे ये वेबसाइट है, आपको जाना है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ, गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो विल सी द, देखते हैं इसका, जाते हैं वहां पे और देखते हैं कैसे आपको मिलेगा. कॉपी दिस, कैन यू सी माय window, Google window? Hello, anyone? Yes, looking. Yes. So in Google window, I have go to this site, and you have put your article or journal name, okay? Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, and you have to search. तो जैसे आप सर्च करोगे तो उस आर्टिकल से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, जैसे ऑथर कौन है, ठीक है, एंड उसका एब्रीविएशन यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड नंबर, ये आपको कॉपी करना है. जब भी आप आर्टिकल लिखोगे तो ये एब्रीविएशन आपको कॉपी करना है. देन टाइटल क्या है, कब वो स्टार्ट हुआ जर्नल, इसकी सब स्टैटिस्टिक यहाँ पे आ जाए. तो मोस्ट ऑफ द जर्नल जो पबमेड इंडेक्स है या फिर जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, इनके आपको इनिशियली इसमें मिल जाएगी.
लेकिन अगर कोई जर्नल आपको इसमें नहीं मिलता है तो दीज आर द कॉमन गाइडलाइंस वी कैन यूज। लाइक जर्नल के लिए आपको जे यूज करना है, इंटीग्रेटेड के लिए मेडिसिन के लिए MED यूज करना है। तो दीज आर द, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इंटरनेशनल है तो INT, इंडिया है तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो जो जर्नल आपको मिलते नहीं है तो यू कैन यूज देयर रूल्स, फॉलो द रूल्स एंड यू कैन मेड द एब्रीविएशन लाइक देम। ओके, एंड let's see the internet references now. How to give the internet references? Because most of the time जब भी हम जाते हैं तो internet references most of the time हम यूज करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, इंटरनेट की लिंक है वही दे देते हैं, वो हो गया इंटरनेट। not like when you are giving the Vancouver style references, there are rules for internal references also. So what are the internet references, rules for internet references? We'll see that. तो सबसे पहले जो भी इंटरनेट से आप लेते हैं तो वहां पे ऑथर रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, जैसे कोई आर्टिकल है तो वहां पे कभी कभी जो अच्छे रेफरेंसेस है वहां पे आपको ऑथर मिलेगा, तो आपको ऑथर का नेम लिखना है, देन टाइटल लिखना है, ठीक है। तो टाइटल आपने लिख लिया, देन यहाँ पे आपको ब्रैकेट में इंटरनेट लिखना है, देन कहाँ पे पब्लिक, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, न्यूयॉर्क इज अ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, देन पब्लिशर यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ पब्लिकेशन, कब वो पब्लिश हुआ आर्टिकल, एंड व्हेन यू हैव एक्सेस दैट स्पेसिफिक इंटरनेट आर्टिकल। सी इंटरनेट इज अ लाइक वेब। अब जैसे इंटरनेट पे देखेंगे, रोज इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती रहती है। जैसे आज आपने वहां पे लिया लेकिन कल आर्टिकल वहां से डिलीट हो गया। जैसे आपने गए, हमने तो यहाँ से लिया था सर, बट वहां तो आपने किस तारीख को वहां से लिया, किस कौन से टाइम को लिया, ये आपको सब मेंशन करना है। वो आपको ब्रैकेट में अपडेट कब हुआ है, वो कब आपने साइट किया है, ये सब यहाँ पे 2002 में मैंने इसको साइट किया था, 9 जुलाई, और लिंक आपको देना अवेलेबल फ्रॉम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो आर्टिकल है उसके ऑथर नहीं रहते, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ऑथर नहीं मिलता है तो मत लिखो ऑथर के नेम, एटलीस्ट आपका जो टाइटल है वहां से चालू करो। एंड लेकिन आपको ये देना बहुत जरूरी है कि आपने कब उसको साइट किया। May 16 को जैसे मैंने यहाँ को साइट किया, 2000 यहाँ पे ये अपडेट हुआ है और साइटेड ऑन 2002 जुलाई 9, और लिंक आपको प्रॉपरली जैसे आपने लिया है वो लिंक आपको देना। तो ये आप सेम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑथर नहीं है कोई। जैसे ये आर्टिकल लिया है मैंने, हुज सर्टिफाइड, ऑथर नहीं था, लेकिन ठीक है ऑथर नहीं है तो आर्टिकल का नेम लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में इंटरनेट लिख दिया, कहाँ पे पब्लिश हुआ है, ये सब यहाँ पे आ गया। एंड ऑल्सो सेम, तो व्हेन यू आर कॉपिंग द लिंक, यू हैव टू कॉपी कंप्लीट लिंक। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखे, जो भी कंप्लीट लिंक है आपको वहां पे उसको कॉपी करना है। तो दीज आर द वैनक्योर स्टाइल। अभी आपके लिए होमवर्क है, आप बताओ प्लीज इसमें क्या क्या आपको गलतियां लगती है, जैसे वैनक्योर स्टाइल रेफरेंसिंग। एंड अगर आपको समझ में आया है तो आपको बताना है इसमें, इस आर्टिकल में वैनक्योर स्टाइल से क्या क्या गलतियां हुई है। आपको पंक्चुएशन मार्क देखना है, आपको सब देखना है, ऑथर नेम क्या है, और ने बराबर लिखा है नहीं लिखा है। यस, डॉक्टर अमित इज सेइंग एटल, बराबर है। मिनिमम एटलॉस आपको 6 ऑथर लिखने के बाद एटल लिखना है। देन अनदर, क्या गलती हो सकती है इसमें? यस, पेज नंबर ऑल्सो, डॉक्टर सुप्रिया इज सेइंग पेज नंबर ऑल्सो यहाँ पे आपको कंप्लीट नहीं लिखना था। वेरी गुड। जर्नल नेम एज पर द एब्रीविएशन ये लिखना था, वेरी वेरी गुड। तो विल सी द ऑथर, ठीक है, एटलीस्ट आपको 6 ऑथर के बाद एटल लिखना था। देन फुल स्टॉप दिया नहीं। देखो यहाँ पे आपको जो आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम क्या है, स्टडी ऑफ इनफर्टाइल इमरजेंसी, यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं देना था, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना था, ठीक है, आर्टिकल के बाद। देन एब्रीविएशन आपको यूज करना था, वो आपने यूज नहीं किया। देन आर्टिकल देखो यहाँ पे आपको ईयर के बाद आपको सेमीकोलन देना, 2006 सेमीकोलन। एंड these are the volume and issues, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया लेकिन इशू दिया है, ठीक है। एंड पेज नंबर आपको इस तरह लिखना है। तो करेक्ट रेफरेंस विल बी लाइक दिस।
Now another is what are the wrong in this reference? Can you tell me? Yes. एंड नहीं लिखना था, वेरी गुड। तो वहां पे अपने हर एक ऑथर के बाद ये नहीं, देयर शुड बी फुल स्टॉप ऑथर, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेमी कोलन दिया, लेकिन वॉल्यूम और इश्यू के बाद हमने कोलन नहीं दिया। एंड करेक्ट रेफरेंस वुड बी लाइक दिस। सो यू नो दैट कि आपको पता चल कि गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। बट आप सर बोलेंगे सर दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको हर बार ये जो है इतने सारे रूल्स हम ध्यान में कैसे रखें। ठीक है, आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स आर देयर, वी विल आल्सो डिस्कस कि आपको वन क्लिक में आपको ये सब चीजें कैसे अपने पास आ जाएंगी। नहीं ढूंढने की जरूरत है, ना रूल्स आपको याद रखने की जरूरत है, सब चीजें आपको सिर्फ वन क्लिक में हो जाएगी। देयर आर सम सॉफ्टवेयर, सो वी विल आल्सो डिस्कस द सॉफ्टवेयर आल्सो। सो मेन इज आयुर्वेदिक। भी देखो आयुर्वेदिक में तो वैनक्योर स्टाइल तो है, लेकिन जो वैनक्योर में वहां पे क्या दिया आयुर्वेद में कैसे करने का, देयर आर नॉट specific rules. So some reputed journal like IU or IJIM, they have given some guidelines for like Ayurvedic references, how to give Ayurvedic references. So you have to give, when you are writing for Ayurvedic references, so you have to give the references in this style. क्या है रेफरेंस कैसे देना है आपको इसमें, ठीक है। Name of writer like Agnivesh Charak and Durban, and then followed by the name of Sahita, name of Stan, Chikitsa, ठीक है, and followed by editor, ठीक है, जो भी editor है यहाँ का, then edition number, number of publisher, publisher क्या है, publisher city कौन सी है उसकी, then page number. So this is the article references when you are taking for Sahitas. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कोई जो सेम आयुज है इन्होंने ये गाइडलाइंस फॉलो की, तो आपको क्या करना है, जैसे त्रिकम जी, यादव त्रिकम जी आचार्य, तो जादव त्रिकम जी आचार्य भी है और यादव जी त्रिकम जी, तो ये आपको हमने यहाँ पे नेम लिखा, देन फॉलोड बाय एडिटर, देन चरक सहित ऑफ अग्निवेशा, देन विच स्थान is चिकित्सा स्थान, चैप्टर नंबर 15, second edition Varanasi and Sanskrit. So you can use this referencing style. So depending upon when you are publishing references in the specific style, so there is no Vancouver style, but the specific journal has given their own referencing style. जैसे आप आयु पे जाओगे ना, तो आयु में आपको ऑथर्स गाइडलाइन में दिखेगा ये कि आपको आयुर्वेदिक रेफरेंसेस कैसे लिखना है। तो हर एक जर्नल की स्पेसिफिक गाइडलाइंस रहती है आयुर्वेदिक रेफरेंस लिखने की। नहीं है तो आप आयु जो इंटरनेशनल जर्नल है इनकी गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, अगर उन्होंने स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दी। तो दिस आर द गाइडलाइंस गिवन बाय आयु जर्नल। तो आपके वेबसाइट में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि आयुर्वेदिक रेफरेंस आपको कैसे, तो आपको स्पेसिफिकली ऑथर का नेम लिखना है, त्रिपाठी बी, ब्रह्मानंद त्रिपाठी है तो त्रिपाठी बी, बाद में आपको एडिटर लिखना है, फर्स्ट एडिशन अष्टांग संग्रह वाग्भटा सूत्र स्थान आयुष्य कामी अध्याय चैप्टर नंबर 1, वर्ष नंबर क्या है, कहाँ पे पब्लिश हुआ है, पब्लिशर कौन है, ईयर एंड पेज। दीज आर द कॉमन फॉर IJIM, जनरल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो हमारा जर्नल है ये गाइडलाइंस फॉलो करता है। तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर स्पेसिफिक जर्नल यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। एंड सी गाइडलाइंस आपको देखना है, कोई वर्ज नंबर देता है कोई नहीं देता है, तो यू हैव टू सी द गाइडलाइंस। तो हमने यहाँ पे गाइडलाइन दिया, तो कोई जो स्पेसिफिक जर्नल है वहां पे आपको गाइडलाइंस देखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा। तो ये श्लोक है तो इसका हम गाइडलाइंस के अनुसार इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो नहीं कभी आप आर्टे लिखें तो ऐसा मत लिखो चरक चिकित्सा स्थान 40 की, नो, यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। ये ऑथर कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, कहाँ पे वो पब्लिश हुआ है, वो प्रॉपरली आपको लिखना। So it is easy way. I will show the easy way how to find the references. So everyone will go to the Google
दिस गूगल स्कॉलर। ओके, हम गूगल स्कॉलर पे जाते हैं और विल सी द ओबेसिटी। ठीक है, तो आपने जो आपका आर्टिकल है ओबेसिटी पे, आप आर्टिकल लिख रहे हैं एंड यू हैव टेकन द रेफरेंस फ्रॉम दिस आर्टिकल। तो आपको उसके लिए जाने के, आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे विल टेक दिस ऑन दिस आर्टिकल, यू हैव टू क्लिक दिस आर्टिकल। वहां पे सब आ जाएगा, जर्नल नेम क्या है, उसके ऑथर क्या है, कब ये पब्लिश हुआ है, बट इश्यू कौन सा है, ठीक है, पेज नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम आपके पास है नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइट का ऑप्शन दिखेगा, and you see this site option, you have to click that site option and you can get the this referencing style। MLA में लिखना है तो कैसे लिखना है, APA में लिखना है तो कैसे लिखना है, शिकागो स्टाइल में लिखना है तो कैसे लिखना है, वैनकूवर स्टाइल में क्या है। तो you just copy this Vancouver style reference, you can just copy and आपके जो भी आर्टिकल है वहां पे आप लिख सकते। तो नीड नॉट टू हर एक आर्टिकल के लिए आपको वो रूल्स याद रखने की जरूरत है, आपको जस्ट क्लिक करना है साइट पे, और जो भी साइट आपको जो भी आपको स्टाइल यूज करना है, एपीए या फिर शिकागो या हार्वर्ड या वैनकूवर है, इसको जस्ट आपको कॉपी करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% दिस इज आर्टिकल, दिस इज करेक्ट, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ them नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे देखा जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी, ये यहाँ पे उन्होंने जर्नल का नेम पूरा ले ली, ये पूरा नहीं लेना था इनको, इनको इसका एब्रिविएशन लिखना था। व्हाट इज द एब्रिविएशन, हम देखते हैं एब्रिविएशन इसका, एब्रिविएशन क्या है, आएंगे यहाँ पे इस तो यहाँ पे इसका एब्रिविएशन आ गया, देखो यहाँ पे इसका एब्रिविएशन आ गया, दिस इज द एब्रिविएशन। तो 90% केसेस में जो आर्टिकल्स है इनके ये प्रॉपर देता है, बट कभी कभी गलतियां हो जाती है, बट तो यहाँ पे आपको दिखा है कि यहाँ पे आपको एब्रिविएशन यूज करना था जर्नल पे, यहाँ पे नहीं। तो यू कैन गो टू नेशनल लाइब्रेरी और आपको एब्रिविएशन लेके प्रॉपर अभी 100% बुक सही होगा, सही होगी, ठीक है, तो ये आपको देखना है। सो दिस इज द आवर फर्स्ट पार्ट वी हैव फिनिश हियर, and we directly go to the second part because we don't have time, then we'll take the question and answers. Okay, so second part is like what are the softwares that we have used। मैंने बोला ना कि ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपको ये सब मैनेज कर, रेफरेंसेस कैसे देना है, सिंगल क्लिक पे आपको सभी रेफरेंसेस आपके आर्टिकल में आ जाएंगे। So there are some softwares that is used. What are the need of softwares? What is the need? Storing and referencing your references, organizing it. See, if you are working on an article and you are referring hundreds of articles for that single article you are, तो आपको इतने सारे आर्टिकल पहले तो स्टोरेज करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, इंट्रोडक्शन में कौन से रेफरेंसेस दिए है, डिस्कशन में कौन से रेफरेंस दिए। अगर थीसिस के लिए भी आप देखेंगे तो आप मिनिमम 200-300 आर्टिकल तो रेफर करते ही है, तो इतने सारे आर्टिकल को स्टोर कहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो सभी आपके आर्टिकल को स्टोर करेंगे, और इंट्रोडक्शन में कौन से दिए है, डिस्कशन में कौन से दिए, ठीक है। देन जनरेटिंग द स्टाइल्स, जो भी आपने आर्टिकल लिया है तो उसको कौन सी स्टाइल में, वैनकूवर स्टाइल में लिखना है कि एपीएस स्टाइल में लिखना है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में लिखना है, ठीक है, ये आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। देन इजीली कन्वर्टिंग रेफरेंस स्टाइल इनटू सूट पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। समझ लो कोई आर्टिकल है पबमेड में, आपने भेजा उसको एंड योर आर्टिकल गेट रिजेक्टेड बिकॉज सम रीजंस, ठीक है, बट अगर आपको वही आर्टिकल अभी दूसरे जर्नल में भेजना है पबमेड के, बट बिफोर आपने जिसमें भेजा था वो एपीएस स्टाइल यूज कर रहा था, अभी सेकंड आर्टिकल जिसमें आप भेजे वो वैनकूवर स्टाइल यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ा, सभी आर्टिकल आपको जो 100 रेफरेंसेस दिए उसको, तो सभी आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, अगर आप 1 बाय 1 सबको मैन्युअली कन्वर्ट करोगे एपीएस स्टाइल से वैनकूवर स्टाइल में, कम से कम हमको 3-4 घंटे तो लगेंगे। लेकिन देयर आर सम सॉफ्टवेयर उसमें क्या आपको विद इन अ क्लिक सभी जो आर्टिकल आपके जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। एपीए में है तो आप वैनकूवर में हो जाएंगे, वैनकूवर में है तो एपीए में हो जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर
In a software we can change instantly one जो guidelines है उसके अगर, then it also save your time and effort, avoid the confusion. So what are the softwares? There are EndNotes, Mendeley, and citation style, language style, and Cite This For Me. This is the internet software. कुछ सॉफ्टवेयर ऑफलाइन मिलते हैं आपको, कुछ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मिलते हैं. तो जो साइट फॉर दिस फॉर मी, दिस इज ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं. आप जाओ गूगल पे जाओ, साइट दिस फॉर मी पे जाओ, और आपको इजीली आपको वहाँ पे सभी जो है इसका मिल जाएंगे. आपका डेमो देखेंगे इस थोड़ी देर में. और मेंटली इज ऑफलाइन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसमें आपको मैनेज स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस इसमें स्टोर कर सकते हैं. वी ऑल्सो सी द डेमो ऑफ मेंडली ऑल्सो. तो रेफरेंस देते समय हम क्या करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट बोलते हैं, इंसर्ट इन नोट में जाते हैं, और ऐसे हम यहाँ पे रेफरेंस जनरली यूज करते हैं. तो दिस इज द साइट, दिस फॉर मी, दिस इज साइट. विल डायरेक्टली गो टू द डेमो and we'll see. Okay, side this one. Is my window is visible? Yes, anyone? You can put in the chat box. Yes, okay, thank you. So this is the website, site this for me. अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटरनेट से कोई रेफरेंस लेते हैं. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, ये आर्टिकल था. We go to the Google Scholar. And we have referred this आर्टिकल. ठीक है, अब गूगल स्कॉलर में आपको हर एक आर्टिकल नहीं मिलेगा. गूगल स्कॉलर में तो बहुत इजी है कि आपको वो साइट यहाँ पे मिलेगा, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल गूगल स्कॉलर में रजिस्टर नहीं है. तो आपको क्या करना है, ये लिंक कॉपी करना है. जस्ट कॉपी द लिस्ट लिंक, जो भी आर्टिकल की लिंक है जिसको कॉपी करना है, एंड यू हैव टू गो टू द क्रिएट साइटेशन. क्लिक द क्रिएट साइटेशन. ओके, so you have taken from the website, click the website, okay, and paste this link on the website and search. जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे, will give the results, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. जो कब एक्सेस हुआ है, क्या है, वेबसाइट टाइटल. Then you have to do continue. And complete the citation. We'll do one by one. Some error is there. So we'll click this, create the citation we are taken from the journal, okay, and search by title or DOI. The title of journal, the title, medical counseling, obviously. Copy this title. We'll put this. Search. We'll get this. सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपके सभी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. यहाँ पे आपको कुछ नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करते जाना है. इसमें कुछ है तो उसमें आपको जैसे आप कंप्लीट करोगे, यहाँ पे आपको रेफरेंस इसका आ जाएगा. अपने आप रेफरेंस यहाँ पे जनरेट. आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आर्टिकल का नेम वहाँ पे लिखा, या फिर आप लिंक भी वहाँ पे रख सकते. तो आपको ये कॉपी करना है, और ये आप कहीं पे भी उसमें रेफरेंस डाल सकते हो. तो ये हार्वर्ड स्टाइल में, आपको वैनक्यूअर स्टाइल में चाहिए. Just use the Vancouver style.
जैसे आप वैनक्यू स्टाइल क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये रेफरेंस वैनक्यू स्टाइल में यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। जस्ट कॉपी दिस। तो देखो ये वैनक्यू स्टाइल में आ गया। तो यू कैन चेंज द रेफरेंसिंग स्टाइल यहाँ पे जो भी है, और यहाँ पे ले इवन आपका बुक का रेफरेंस भी यहाँ से आप ले सकते हो। कोई बुक है, मतलब आपने कोई आर्टिकल लिया है, तो ये दिस इज वेरी गुड वेबसाइट। तो आपको लिंक भी ले सकते हो यहाँ से, या फिर बुक ले सकते हो। जैसे आप बुक है, जर्नल है, वेबसाइट है। इफ यू आर टेकन फ्रॉम न्यूज लेटर, वाउचर, चैप्टर, और यूट्यूब ऑल्सो, यू आर टेकन फ्रॉम ईमेल ऑल्सो, इंसाइक्लोपीडिया ऑल्सो। तो आपको जो भी है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, लिंक या फिर जर्नल का नाम लिखना है, और सिर्फ सर्च करना है, तो रेडीमेडली आपको रेफरेंस बना के दे देगा। दिस इज कॉल्ड एज साइट दिस फॉर मी। And another is like software. We'll discuss about the software also. See the software also. ये हमने देख लिया, यहाँ पे वेबसाइट पे हमने क्लिक किया। जैसे वेबसाइट पे क्लिक किया, हमने लिंक डाली थी, देन सर्च किया, ये सब आ जाएगा। अगर इसमें कुछ मिसिंग है तो आप उसको भर सकते हो, तो मैन्युअली भी, ठीक। और यहाँ पे आपको अपने आप आ जाएगा। तो वहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, आवर स्टाइल है, या फिर जो है, जैसे मैंने डिक्शनरी से लिया, आताप शब्द मैंने दिया था डिक्शनरी से, विलियम्स है मोलियम, तो यहाँ पे मैंने आताप शब्द डाल दिया। आपको ये चेंज चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। So another is Mendeley software that is generally used for academicians for the it automatically write down your references. अभी देखो एक आर्टिकल है, और आर्टिकल में आपको हर एक को 100 रेफरेंसेस लिखना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, या फिर हर एक रेफरेंस को जाओ, गूगल में जाओ, उसको सर्च करो। नहीं, आपको ऐसा चाहिए कि एक क्लिक में सभी 100 के 100 रेफरेंसेस अपने आप आ जाए। आपको डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता चाहिए कि ये आर्टिकल मैंने यहाँ से लिया, बस इतना ही आपको पता चाहिए। विल सी द डेमो ऑल्सो। तो एक 100 रेफरेंसेस आपको एक आर्टिकल में डालना है इजीली। सिर्फ उसके पीडीएफ डाउनलोड करना है। सिर्फ आपके पास पीडीएफ चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, ना उसके रेफरेंसेस जनरेट करना है, ना देखना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको पीडीएफ जो 100 पीडीएफ आपने सेव कर लिए, और आपको जैसे क्लिक करोगे अपने आप वो रेफरेंसेस यहाँ पे लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। इट फेच द डेटा फ्रॉम द पीडीएफ एंड इट विल गेट द रेफरेंसेस। आई विल शो द डेमो इन 5 मिनट्स। तो आपको क्या करना है, मेंडेली ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए आपको गूगल में जाके मेंडेली सर्च करना है, और उसको आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड होने के बाद ये आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। देन ये रजिस्टर के लिए पूछेगा। अगर आप न्यू रजिस्टर है, तो आपको न्यू साइन अप पे करना है, और आपका जो ईमेल है, ये आपको इसमें सब इंफॉर्मेशन डालना है, बिकॉज वी आर द न्यू यूजर। तो आपको रजिस्टर करते समय साइन अप पे, या फिर न्यू यूजर पे साइन करके आपको यहाँ पे करना है, ठीक। एंड देन आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, ठीक है। आपने डाउनलोड कर दिया लैपटॉप के लिए, ठीक है। देन यू हैव टू गो एड ऑल्सो प्लगइन। प्लगइन के लिए वहाँ पे एक लिंक आएगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, तो माइक्रोसॉफ्ट प्लगइन के लिए यहाँ पे एक लिंक आएगा, इंस्टॉल नाउ। इसको आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो जैसे आप खोलोगे, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थोड़ा अलग दिखेगा। यहाँ पे मेंडेली अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये आपके व्हाट्सएप से इंक्रिएट ये हो जाएगा। सी अब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, लाइव डेमो दिखाएंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देन आई विल सी द लाइव डेमो, ठीक है। ये आपके लैपटॉप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से इंटीग्रेट हो जाएगा। देन आपको ओपन करना है आपका सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपने लैपटॉप पे आपको यूज किया, ठीक है। और आपको जो अपलोड जितने भी आपके पीडीएफ है, इसमें आपको अपलोड कर देना। So we see the demo directly, so you can understand. The first we'll go to the Google. Delete this. हम गूगल पे गए, यहाँ पे हमने मेंडेली सर्च किया। यहाँ पे आपको जाना है और ये डाउनलोड करना है आपके लैपटॉप में। यहाँ पे डाउनलोड कर, यहाँ पे डाउनलोड।
तो ये जैसे डाउनलोड होगा ये आपके इसमें आपको बाद में इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर दिया है इसको। कैन यू सी माय डेस्कटॉप? यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपको साइन इन के लिए पूछेगा, तो आपने जो भी ईमेल और पासवर्ड लिया था ये आपको इसमें साइन इन करना है। ओके, ये आपका ये ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, शो द ऑप्शन ऑल्सो इंस्टॉल मेंडली सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जैसे आप ये इसको इंस्टॉल करोगे तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट से भी ये हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट भी इंटीग्रेट हो गया। देखो ये मेंडली की साइट, यहाँ पे जो आर्टिकल है आपका इसके बाजू में अपना भी मेंडली वाली यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक फोल्डर बनाना है जहाँ पे आपने जो भी आर्टिकल है, जैसे मैंने ये 9 आर्टिकल रेफर किए, तो यहाँ पे मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के नंबर दे दिए, ठीक है। देन मैं सॉफ्टवेयर में गया और इसको ऐड कर दिया, ऐड न्यू फाइल मैंने यहाँ से ले लिया और मैंने यहाँ पे जो है सभी इसको इसमें डाल दिया। तो जैसे ही आप जो पीडीएफ है ये सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे देखो 1 2 ये सभी आर्टिकल यहाँ पे, जैसे आप क्लिक करोगे इसमें तो उसका पूरा डिटेल आपको आ जाएगा, आर्टिकल का ऑथर कौन है, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यू कैन टैग ऑल्सो दिस वन, टैग मीन्स ये मैंने इंट्रोडक्शन में डाला है, ये इसमें डाला है, ये पूरे आर्टिकल यहाँ पे जो है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये आ गए। अब मैं जैसे ही वर्ड में खोलूंगा इसे, ठीक है, एंड विल डू द रिफ्रेश माय विंडो, सिंपली आएगा। You just have to refresh it, update from the library, okay? तो अपने आप सभी रेफरेंसेस अपने आप लग जाएंगे। देखो यहाँ पे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। जो भी मैंने पीडीएफ अपलोड किए ना, पीडीएफ में से ना मैंने कुछ किया, सिर्फ पीडीएफ अपलोड किया तो अपने आप रेफरेंसेस यहाँ पे पीडीएफ का जो था आ गया। तो जस्ट यू हैव टू गिव रेफरेंस। जैसे मैंने ये पहला है यहाँ पे रेफरेंस देना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट 1, अपने आप रेफरेंस यहाँ पे आ रहे हैं। अभी ये देखो यहाँ पे कौन सी स्टाइल लगी है, एपीए स्टाइल लगी, ठीक है। ऑथर का नेम आया है, आपको वैनक्योर स्टाइल चाहिए तो सेटिंग में जाओ, यू कैन चेंज रेफरेंसिंग स्टाइल टू वैनक्योर। सॉरी, दिस इज द लैंग्वेज, रेफरेंसिंग स्टाइल यहाँ पे वैनक्योर। जैसे आ जाएगा तो यहाँ पे 1 लिख के आ जाएगा, देखो बराबर है। देन ये इसको सेकंड मुझे रेफरेंस देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करो, ये अपने आप 2 पे यहाँ पे आए, तो अपने आप रेफरेंस यहाँ पे लग रहे हैं। तीसरा है तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो क्लिक किया। चौथा है तो चौथा मुझे लिखना है, इसको चौथा देना है, तो आई हैव जस्ट गिवन दिस चौथा और 5वां। इस सेंटेंस के लिए मैंने चौथा और पांचवा दोनों के लिए, तो यहाँ पे 4 5 अपने आप आ जाए। ये जो लाइन थी इसके लिए मैंने 2 रेफरेंस आर्टिकल रखे, तो 4 5 अपने आप आ गए। Then we'll go to the 6th reference. ये सब रेफरेंसेस लग गया है, तो आपको लास्ट में क्या करना है, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे आप इंसर्ट बिब्लियोग्राफी यहाँ पे क्लिक करोगे और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो अपने आप देखो जो भी मैंने आर्टिकल में नंबर दिए ऊपर 1 2 3 4, अपने आप उसी सीक्वेंस में जो है आर्टिकल के जो आएगा। चलो पब्लिश हो करो, आप शाम को मिलते अपन।
तो मुझे Vancouver style दोपहर को वापस लेने आप आऊंगी कर तब सकते मिलते हैं, हैं। Vancouver style, ठीक है? Now this is the चलती क्या? demo of the बाय article. बाय। अच्छा हाँ क्या ऐसा टाइमिंग से क्या? तो इधर आने वाला है कि उधर आने वाला है? अभी तो मेरी सास के बारे में So we have taken this. तो आप ऐसे करके मेंडली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसके बहुत सारे फीचर है बट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द फीचर्स। इसमें आप सभी पीडीएफ डाल सकते हैं, ओके। एंड देन ऑल्सो वी ऐड सम, सिर्फ आपके पास डीओआई है तो डीओआई यूज करके भी आप कोई आर्टिकल यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज माय बुक वी हैव पब्लिश। अगर आपको कोई रेफरेंसिंग स्टाइल है या फिर जो मेरी नोट्स यहाँ पे मैंने दिया है तो ये सब आपको ये बुक्स में मिल जाएंगे, क्या क्या वैंकूवर स्टाइल कौन सी है क्या है। तो दिस इज ऑल्सो इन द सिलेबस, एमबीए फर्स्ट ईयर सिलेबस वी हैव सीन दिस वन ऑल्सो। And this is the virtual WhatsApp number. We can ask any question to this virtual WhatsApp number. Okay. And this is 9112353573. Okay. So if you have any question, you can directly ask me or you can ask me in the chat section. Thank you. Thank you everyone for listening. Any question? Very nice and elaborative lecture on the reference style and how to use the software to cite the various style of references. You have demonstrated it very well with the help of the various software as in the online as well as in the Microsoft Word, like a Mendeley software, which is used on very was ground by the various researchers, those who write the article usually. They most of the time use the Mendeley software for citing the references. So very nice session, Dr. Chetan. Really, I congratulate and thank you for giving your valuable time to share the thoughts for the reference style, how to manage it. It's very useful. So I would like to ask the participant if any question or any doubt, they can put in chat box as well as they can raise the hand so that Dr. Chetan will answer you directly. Just Dr. Smita, you can answer. Sorry, you can ask me question, but just unmute yourself and ask the questions. Dr. Smita, I have allowed you. Yes, Dr. Smita, just you can ask question. Or you can ask in the chat box also, no problem. See, these are Yes, the yes. few softwares like Mendeley, EndNotes. There are some softwares, so you can. अगर आप इसमें मास्टर हो गए तो आपको इजी हो जाएगा। तो थीसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थीसिस के लिए आर्टिकल्स है, कौन सा आर्टिकल, क्या होता है कि हमने कंक्लूजन लिखा या फिर रिजल्ट लिखा, कुछ आर्टिकल हमने रेफर किए थे और बाद में वो मिसप्लेस हो जाते। तो सॉफ्टवेयर इज अ वेरी गुड थिंग, यू कैन स्टोर ऑल द रेफरेंसेस देयर। Someone is asking. Yes, yes. Dr. Chetan, someone is asking that if PDF is not available, can we use the abstract copied in the Word file for Mendeley software? If PDF is not available. No, it is available on the, it is a free software and it is available on the. If the PDF of particular article not available online, then can we copy the abstract in the Word file for the Mendeley? See, there is in that software, you can use also the link also. I have given the DOI also. Okay. You can search the article by DOI also, even in the link also. There are so many. The PDF is easy way to give references. मैं सिर्फ PDF बताया है, लेकिन पर PDF नहीं है अवेलेबल। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल तो PDF तो अवेलेबल होता है ना। जो भी आर्टिकल आपने पब्लिश हुआ है उसका PDF तो आपके पास होगा ही, नो प्रॉब्लम। विदाउट PDF नहीं है, लेकिन कोई आर्टिकल PDF पब्लिश नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है। तो ऑल्सो देयर इज अ लिंक option also in the Mendeley software, so you can paste the link and it will generate the reference for you.
and you can change the APS style में लिखना है कि Vancouver style में, just in a one click you can change the referencing style also. Okay, thank you. Yes. Anyone? Any questions? Dr. Yes, the Smita, recording is would you like to available ask on question? YouTube also. Okay, Dr. Vishal is wanted to ask the question. Dr. Vishal, I have allowed you. Yes, the recording will be available on YouTube channel. We will share the link of this lectures recording. Dr. Vishal, I have allowed you. Kindly unmute yourself and you can ask question. Dr. Vishal Patil, you have raised your hand. Unmute yourself and you can ask the question directly to Dr. Chetan Gulane. Yeah, you can ask. Unmute yourself. Yeah, someone is asking, can you explain the features of Mendeley again? But due to time bound, we cannot take it repeats because after that, I have to take. Yes. Hello. Yes. Yes, sir. You are audible. I was not able to attend a full seminar, so I will request to share the recording on YouTube or on WhatsApp group. That will be better. Thank you, sir. Okay. We'll save it. Thank you, sir. Okay, Okay, so thank you very Dr. much. Chetan, for your Yes, nice thank you. lecture. So now I would like to start the lecture on publication guideline. Due to some unavoidable reason that Dr. B.C. Bhavneswar was not able to deliver his lecture on the publication guideline because current ongoing inspection of NCIC is going there. Dr. Sundar, your voice is not. Okay. Sorry. Yeah. Sorry, due to some error, I forgot to unmute myself. Dr. Vishnu Bhavne was supposed to take the lecture on publication guideline, but due to ongoing research and visitation at his college, Dr. Bhavne sir did not able to deliver the session on publication guideline. So I will take his sessions publication guideline. So various journals generally have their own set of guidelines. So particularly they ask the article in their patterns, in their own patterns. Every journal has given their guidelines on their websites. So we will see. So we will see the particular guideline of various articles. So generally what happens, there are certain types of manuscript which generally submitted by the authors to the various journals. First is the editorial letters. When someone want to write a letter to editorial, that editorial letter has different patterns.
It is not like, embroidered format, introduction, material methods. This is just letter. You just have to write a letter to editorial on a particular topic to various journals. So editorial letters or editorial is one of the type of manuscript. Then next is the original research article. If suppose someone has done the research on the particular human study, either maybe animal study, that is experimental study, clinical study, observational study. So that is the original research article. The next is a review article. That is, you have to just compile particular thing and you have to add some new manuscript, new matter on that thing. That is a review article. That is also known as a literary or conceptual review. And some people also take case study, case report that has something, there are certain guidelines for writing these articles. And some authors wanted to write a review on book review, product review. That sometimes some authors do the meta-analysis. So all these types of manuscripts have a separate style of writing as per the journals. So we'll see what exactly should be in particular component of any articles. So general format of any paper is, first is the title of page. Any author or means all must have to put a title on that particular article, either it may be original research, review article, or case study, whatever the article type. You have to put a title on the top of the page with abstract. After that, you have to put the abstract. That also need to structure abstract or sometimes descriptive abstract. This we will see in next slide. And after that, you have to write the background or introduction of your articles. After that, you have to write the objective of your particular paper. Sometimes it is not included in review article. After introduction, you have to write the material and method, that is methodology part. Then result, then discussion and conclusion. All known that about embroidered format, IMRAD, result and discussion. And after that, you have to also put or write a conclusion, then acknowledgements and conflict of interest reference. This is this contains hardly 8 to 9 points, which one must contain, one must write in any articles. So what should be the ideal title should be, ideal title कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे कि जैसे हम लोगों को यूनिवर्सिटी में गाइडलाइन दिया है, the title should be very concise, informative. It should not be too much lengthy or should not be too much short. The running title should consist of not more than 25 letters and spaces. Ideally, it should be as brief as possible, but it should also highlight your study design, which patient you have taken or which criteria or particular disease you have taken, and that should be convey the essential message to the reader or a third party or any stakeholder. That should not be ambiguous, and it should not be so short, just a title of disease, just a title of drug name. It should highlight your actual message should be reflected through the title. Now author name, Dr. Chetan highlighted how should we name the author in the article. You can write the number 1, 2, 3 after the name each author, and you can subscript 1, 2, 3 while you writing name of author 1, 2, 3, 4, 5, and you need to write the educational qualification either or designation like a lecturer or assistant professor, associate professor, professor, and their working address or institution name. Suppose a faculty working in the college, then you have to write or put the name of institution followed by the their educational qualification or the designation. And you have to also write or put the full postal address as the corresponding author in your papers. Then abstract, there are two types of generally types of abstract, structured and non-structured. And well-structured abstract should contain at least 200 words. Some journals ask about 250 words, 300 words. So accordingly, you have to write, because it should not be so short or should not be so lengthy. And you should clearly cover the background, objective of the study, methodology, particular protocol, statistical test use, and ultimately, in short, discussion as well as the conclusion should be there. And it should also contain at least 3 to 6 keywords, which can reflect your whole articles, 3 to 6. But it should not contain. If suppose you are writing the article on any disease, some people write keyword in Ayurveda, Tridosha. It should not like that. It should highlight an actual research points. Suppose your research will be on diabetes mellitus and particularly a particular drug, for example, Sarfaganda. So in keywords, there must be word like Prameha, diabetes mellitus, Ashwagandha, random sugar, like that. So these words will be used for the indexing purposes, and the title should be
should bear the title of the paper. Okay. So you should write abstract in particular word and along with keywords. Then material method. This section contains sufficient details so that all experimental procedure can be reproduced. And it also contains sometimes if you have taken drug or manufacture, the location of study, medical equipment, instrument. In clinical study, the inclusion criteria, drug dose, treatment plan, all these should include in the material and methodology. Sometimes adverse reaction, methods of reporting the adverse drug reactions, and it should be as per the accordance with the Indian Council of Medical Research ICMR protocol, or it should be approved by institutional ethical committee. So here you can add this project or this research is approved by institutional ethics committee with the later number. And if you want to write the article based on the research on animal study, so you have to take the institutional ethical committee from animal study also, and you have to include all the protocol related to animal study design in the material methodology. And after that result, whatever the result section, it should be concisely and present the experimental data. It should contain the tables, figures, and table and figure should be, table should be named. Its title should be there. Every table should be numbered there. Table number 1, table number 2, table number 3, with the table heading. Okay, it should be in appropriate manner. Should not contain more than 5 columns or not contain more than 10 rows, because sometimes people give the 7-8 rows, more than 10-15 columns. So it should be very complex and not to read. One cannot read it properly or cannot summarize it properly. So it should be very concise. Hardly 3-4 columns or not more than 7 to 8 rows. The result section should be clear, concise, and present the experimental data that I have already described it. And how to write the table and figures. Only MS Word table format should be used for the preparing tables. Number tables conspicuously in according to their appearance in the text. Add the caption, brief title below the table only, or you can add the above also. Unit of measurement should be abbreviated. And please avoid the vertical rule setting the table cells. Figure should be in the JPG format. If you putting in figure or pictures, that should be only in JPG format. Graph and bar should be prepared in the using Microsoft Excel, and the Dr. Sundar, you are not audible. Just a minute, the network problem is there. This voice is not coming, Dr. Sundar. okay, sorry. Yes. So discussion should highlight the interpretation, significant finding with the mode of action of your drug or particular finding, and you should collaborate some study with your finding. You can compare your study research finding with the other study. So you can cite their study with the discussion part, and it should not be repeated of observation and result. And the final paragraph should be
highlighted with the main conclusion, and you can write some lacuna in your study, or sometimes you can also add the future scope. So limitation of the study and scope of study should also be in the discussion part. Okay, so it is very important part. You should write it properly. For the with the help of many articles, you can make it very properly. And after that, you have to write the conclusion, state it clearly, and main conclusion hardly should be not more than 4 to 5 lines or sentences. Sometimes what happened, some people put the most of part of discussion into the conclusion. That should not be happen, because discussion should carry the how you study carry, what are your finding. That part should be in the discussion. Limitation of the study should be discussion. It should not in the conclusion. Conclusion should be very clear with the, and that should be relevant to your objective also, because it should, if you are not giving it in clear, so people or the reader will not get it idea what exactly you have done. And summary of important illustration may be included in the conclusion part, but it should be also very in short, hardly 3 to 4 points. And now last part is reference. I think Dr. Chetan Gilani has highlighted it very well. You need to add the reference style in Mancure format. Even MHS, Maharashtra University of Health Sciences also have advised all the postgraduate student, PhD scholar to write their synopsis and dissertation and add their Mancure format. Whenever you write any references, that should follow the Mancure format of referencing styles. They should appear as numbers starting to at 1, and at the end of paper they should listed double space line, numerical order corresponding to the order of citation. Some people what they do, it should be like 1, 2, 3, 4, 5, 6 throughout your article or dissertation. It should not like starting reference started from 3, then 10, then 12, then 1, then 4. It should not like that. It should be in an order, in a particular order, that starting from 1 to whatever the reference containing your manuscript. And it should be as per the Mancure style, and the Dr. Chetan has already demonstrated how to cite the reference in particular format, and he has also focused on the how to create it with the help of Mendeley software and some other online software. Even in Microsoft Word, there is a tool which help to design the reference, putting the reference that will citing the reference. Dr. Chetan may highlight that. And sometimes what people do, they may confuse the bibliography and reference. Bibliography is the different part compared to reference. Reference are the actual citations, actual any material part or sentences that you have taken from somewhere and that you have put in your article, and you have to cite there proper. But bibliography may be anything, whatever the books, whatever the text you have written, read during your writing your manuscript or the articles, but that need not to put in the reference type. You may attach the bibliography in your thesis, but that should also follow alphabetical manners starting from ABCD to Z. But in article, you have to only write the reference, not bibliography. Okay, thank you for your kind participation. If you have any question, you can directly chat, type in chat box. Otherwise, you can raise your hand so that you would like to answer it directly. Can reference be given in smaller size or single space? Dr. Chetan, can you answer, please? What is the question? Someone is asking that. See, there are some always guidelines when you are using some journals. Can reference be given in smaller size single space? Smaller size single space, I don't understand what he wants to say, but you follow the guidelines. If there is a guidelines, Mancure style guidelines or any Ayurvedic guidelines, the specific journals have their own guidelines also. So you have to use that guidelines. As per the guidelines, if you give the reference, then it will be accepted. Yeah, I will show the 2 articles. What are the lectures I have taken on the publication guideline? I will show 2 articles. One is from PubMed and one is from other international journals. Just 1 minute.
This is an article published in the IU journal, which is a PubMed. The title here you can see what is the actual structure of the article. Here it is the title which is reflecting the study design, the management of Bandetwa with special reference to thin endometrium through the Ayurveda single arm open label pilot results. Here they have given the author name with superscript name of author and followed by their qualification as well as the designation. Has given the abstract in a particular structure format, which include the background, aim, material method, result, and conclusion, and followed by the keyword. Hardly 6 to 7 keywords have been given by the authors. Okay, title, abstract, and after that keyword, and after that, author highlighted or given the first part of article, that is introduction. Okay, after that introduction, author has okay. After material method, author has given everything. And author has given here, you can see the table number, table heading, and various column heading. Then after that, the author has written here observation and results, where he has highlighted various points with the proper table, proper graphs, graph numbers, as well as the heading of the graph, below the graph, and all the graph prepared with the help of Microsoft Excel. Okay, and after that, author has added the discussion part here. So, author given the discussion point on effect on therapy, okay, with the help of graph and table, and after that, you can see here the conclusion, hardly in 6 to 7 sentences. And after that, acknowledgement, conflict of interest, and after finally enter the references in the Vancouver style of reference. Okay, you can see here. Dr. Chetan has already highlighted it. I will not repeat it, like author name followed by the title name followed by the journal name, publication year, volume, issue, page number. Okay, you can see every reference like the appropriate manner. So these are the points which completely included in this article, which I have already told you. Got it? Okay. If anybody have any question or query about publication guideline, they can ask, they can put in the chat box. Okay. So if no any questions, so now I would like to remark from Dr. Yeah, some question is, what is the shared communication type article? Yeah, it may be sometimes communication with the editorial board or sometimes editor-in-chief for a particular happening. For example, nowadays non-communicable diseases are rising.
So particular policy guideline, or sometimes you want to intervene or you want to advise makers, or sometimes you want to advise the it's just like editorial letters. Yeah, it can be considered as an article. Even short communication as well as the editorial letter to editors also, even a book review also considered as an article. Okay. So if there is no any question, so I would like to request today's our MHS observer, Dr. Sivanand Tonde sir from Ayurveda Seva Sangh College, Nashik. So kindly express your few words, sir, thoughts about this today's national webinar on publication ethics. धन्यवाद। आज का जो वेबिनार आयोजित किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजित किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे भी पर्सनली मुझे इस सेमिनार से काफी कुछ सीखने को मिला है। मैंने भी पीएचडी किया है, हमारे भी वो जो 6 दिन का रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता था, मगर वो मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर सुंदर? Yes, yes. हाँ, तो वो जो टॉपिक भी जो एथिक्स के बारे में जो लिया गया है वो बहुत ही अच्छा था, और उसके जो कंटेंट है वो कंटेंट का पूरा श्रेय हमारे जो आज के फैकल्टी मेंबर थे डॉक्टर सुंदर और डॉक्टर चेतन, इन्होंने जिस ढंग से दोनों टॉपिक, और अछूते टॉपिक है ये और खासतौर पर अभी इतना सुनने के बाद तो मुझे तो एक ही जो ये लगता है कि अभी तो हमारे जो डेलीगेट पूरे जो डेलीगेट है वो आज से कुछ रिसर्च लिखना शुरू कर देंगे। उन्होंने उनके पूरे प्रेजेंटेशन में भी डॉक्टर सुंदर जी ने और डॉक्टर चेतन जी ने भी जो प्रैक्टिकल भी करवा लिए वो भी बहुत ही अच्छे थे, हौसला अफजाई करने वाले थे डेलीगेट लोगों का कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये प्लेगरिज्म और प्रेजेंटेशन के बारे में डॉक्टर चेतन जी का ये टॉपिक खास तौर पर मुझे अच्छे लगे, और हमारे पूरे डेलीगेट्स लोगों को भी उनकी बहुत कुछ मदद होगी ऐसा मुझे लगता है। मैं भी विदर से हूँ, विदर के एक कॉलेज से ये आयोजित किया जाता है। पूरे जो फैकल्टी मेंबर भी है विदर से ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको सुनते हुए और मुझे गर्व महसूस हुआ कि विदर के इस कॉलेज ने एक अच्छे ढंग से एक वेबिनार आयोजित किया रिसर्च एथिक्स के बारे में, राइटअप के बारे में। मैं आयोजकों को और तहे दिल से बधाई देता हूं, और इसका श्रेय हमारे दोनों फैकल्टी मेंबर को जाता है, डॉक्टर सुंदर और डॉक्टर चेतन। अभी मुझे पता चला कि हमारे डॉक्टर कमलेश महाजन जी जो है इनके साथ भी आप रहे हैं, उन्होंने भी मुझे आपके बारे में बताया, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि आप दोनों विदर्भ आयुर्वेद से के स्टूडेंट हो। मैं सबको बधाई देता हूं, और महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ ने ये मुझे जो मौका दिया है यहाँ पर एक एज ऑब्जर्वर, तो इसलिए मुझे भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और मुझे काफी कुछ इस सेमिनार से खुद को सीखने को मिला है। धन्यवाद, और आप सबको बधाई। Okay, sir. Thank you for your words and appreciation about this seminar. We would like to present you e-certificate here for your presence as a MHS observer. So we will save you on email also, sir. But thank you for your presence as a MHS observer. Thank you, sir. And we will also like to present a certificate to our speaker, Dr. Chetan Gulhane, as a guest speaker on subject publication ethics, reference style and software management of the references in this national webinar. Thank you, Dr. Chetan. So I would like to ask
Dr. Vaishali Mishram to proceed with the vote of thanks. Dr. Vaishali Mishram. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Good afternoon to all. I would like to thank our Secretary, Mrs. Tarini, and our principal, sir, who have always encouraged us to strive for excellence. Thanks for giving recognition to this national webinar by MUHS Nashik, Dr. Awa sir, Associate Professor, Department of Ayush. Thanks to MUHS Observer, Dr. Shivanand Tonde sir, Associate Professor, Ayurveda, Sesang, Mahavidyalaya, Nashik. I would like to thank our speakers, Dr. S.K. Danga sir, Professor and HOD, Department of Chikitsa. He has very well explained and given very informative about the plagiarisms and UGC guidelines. It is very useful and informative lectures when we are doing the MD and PhD work. I am also thankful to CM Gullane sir, MD PhD, Director, Ayurveda Research and Career Academy about referencing and citation. I would like to thank Dr. Shilpa Khobragade madam for anchoring, coordinate the program very well. Last but not least, thankful to all the audience for attending and listening the seminars patiently. I express my heartfelt thanks to all those who have made this event possible. I am sure you found this webinar useful and interesting. Thank you. Have a nice day. Thank you, one and all. Thank you, MHS, for giving recognition to this national webinar. And thank you all the participants for kind attention as well as listening for 2-3 hours. Thank you, one and all.